Okay, today we are going to take the lectures on e-registers or register of patents. Okay, candidates. Hello. Yes, ma'am. Yes. Okay. So register of patents, it will come under the section 67 of Indian Patents Act. Okay. Okay. So you are already aware about Indian Patent Act 1917 and its evolution, right? Yes. Okay. And the section 67, what it says, that is register of patents and particulars to be entered therein. It means what the register of patent contains and what is entered within that register of patents. Okay. So is my screen is the screen sharing or on in here now? It is not yet shared, ma'am. I think. Not yet shared. Okay. Yeah. Probably you will have to pin. Okay, here. Okay. Yes. So I'm on IP India website. Yeah. So you already know about the IP India. Yeah. Yes. In that you can see here comprehensive e-filing, public search, dynamic utilities, right? Yeah. So when we go in the public search, here the section is there, e-register. Okay. In that, when you click here, so the 6-digit number you have to enter. So I have one query already related to the technology transfer. So I will paste here that number. 1 minute, I will paste the same number. Yeah. Okay.
So this is the legal status of this patent. That is the herbal formulation for treating disease and complication caused by the malarial parasite. What is included here? Patent number is included. Application number is also included. So, when you get the application number, can anybody tell me? Ma'am, the numbering system, right? Application number. When you get the application number for your patent? Yeah. This is like year 2016 and Delhi jurisdiction, ordinary application, serial number. Okay. As soon as you file it, you get it. After Yes. application. That is the expected answer. When you file the first, that is the any ordinary application, or when you first file that the abstract or provisional filing, then you will get the application number. Okay. This is the ordinary application. As you know that there are different types of applications. So this application is ordinary application. Can somebody tell me that what are the other type of applications we have? Divisional. Patent on addition. Okay. Patent of addition, then And? PCT. PCT. Convention. PCT national phase. Okay. PCT divisional, PCT patent of addition. Okay. Likewise for convention application. Okay. Okay. So candidates, tell me that you already know about the IPAB, no? Yes, ma'am. Yes. Appellate. Intellectual property appellate board. Appellate board. So I thought so many candidates are a little bit confused about IPAB and how the members are selected in that. So I thought I need to give one assignment related to it for your clarity. And that is appellate board is different and appellate tribunal is different. So what is the difference between both of the terms? You have to list. Okay. So in the next lecture, you can tell me that. Okay. And another things included here is date of patent. This one, date of grant, date of recordal. Okay, so date of grant and date of recordal both are similar. As soon as the grant is done, the recordal is also done, and the appropriate office is Delhi Patent Office. The grantee name is there, and the address is also included. So this is a very important factor, that is address is included here. Next one is the name of patentee. Okay, so the patentee and the grantee same. It is prosecuted by Khurana and Khurana. Okay, so address for that service address is also given. So in this section, you can see due dates for renewal. It is given. Okay, and the amount is also paid. So the patent is working. So you can see here the documents related to this patent. It is available in this section. So you can easily download each and every application related to the patent. Okay, is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Any questions related to this? Because I want to show you before going ahead. That is what This yearly renewal is to be paid yearly, or you can pay it once for all for 10 years, 5 years. Yearly renewal fee. Renewal fees once you can pay, but generally they are paying year wise, no? Every year. Yes.
Ma'am, I have one question. Tell me. Ma'am, there is this entry in column number 47 under fees. So there is this for supplying of photocopies of the document per page. Ma'am, what is that entry about? Like, if we are seeing each and every document on IP India page, like you just opened all the documents page, okay? Like form 2 is there, form 1 is there, and every other detail is there. So what is this about? Or they say if we are asking for any document from Indian Patent Office, there is some charge. So if we are Yes. getting it for free from here, why would anyone apply to IP India office then? No. In the case here, what happens now? What is that number? It's 359826. Yeah, your question is really solid type of question and very good type of question, and it is related to the other licensing processes, okay, and the commercialization. So we will address your question after the end of the class, okay? Sure, ma'am. Sure. Yeah. Could you tell me the one more time the question? What exactly it is you are asking? So, sir, I just asked her if, many times what happens is if any interested person is there, he wants any kind of document from Indian Patent Office, then he should be applying that I want this document from you. Okay, so there is some fee chargeable for that. And I think column number 47 of fees, it is for supplying of photocopies of documents per page. So I really cannot relate like how it is if we are seeing all the documents online, why are they charging us for that? Sorry, this is basically for court proceedings. Like if you any documents photocopy if given by the patent office, it will be like having a stamp and authorization. Okay, Copy of okay. it. Like there will be That is a copy true number. copy. It is stamped. Okay. So Okay. those will be Like for certified court copy. proceedings, normally opposition proceedings, to check the authenticity of the document. That will be helpful. I think so. So we cannot just download this and submit it to the court. We need some authentication. No. Basically, in trademark, like we have all the documents available online, but even if you download it, it is not a legal document. So for any court proceedings, you need to make a copy application of the registration certificate. So the trademark registry with the stamp number, and then they will give with the number and all. So that only can be used as a valid legal document in the proceedings. Okay, so column number 47 is related to that only, right? No, I mean that the reason why we need to take a copy from registered office is that is the reason. Okay. Authenticity of the document. Okay. Thank you, sir. Okay. Yeah. It came into effect from 2014 or 16 somewhere. Before that, you need to apply it, and then only you need to get it only on postal basis. So the printing charges, posting charges, and the document charges will be collected. Okay. Thank you. Okay, this one, let's see. Register to be open for inspection. Okay, so now we see that e-register. Okay, so what section 72 says, the Patent Act 1970 states that the register is open for inspection by the public. Okay, so easily from e-register you can inspect.
After that, what will happen? This assures transparency and enables people to gather evidence from the register, which will be useful and admissible under any proceedings investigated under the Patent Act 1970. The public has the right to inspect the register only during the office hours, and the certified copies of the register with the seal of a patent office. Okay, this is the keyword. So you have to mark this one. That is, the copies of the register with the seal of a patent office are provided to them upon paying the prescribed fees. So these charges are paid for the charges of authentication that said by that sir. Okay, the prescribed fee to be made is mentioned under the first schedule. Okay, so you should know aware about the schedules also. As per the rule 95 of the patent rules 2003. So you can open the document for patent rules 2003. In that in first schedule, you can calculate the fee amount that is given. Okay, is anyone having that patent rules with you? Can anybody tell me what are the different kind of fees are included there? Certified copies 1,000 and 5,000, I believe. Okay. Sir, could you please tell me what It the is row number? 2,400 to 12,000 also. What is the page number, sir? Yeah. Just put Control F and put title. Sir, could you please tell me row number in fees? Is it 49, row 49 or 47? I mean, which one it is? Oh, that 49 is for WIPO. For the I preparation of guess it should be certified. This somewhere one here. for preparation. Okay, it is 800, I guess, for certifying office copies printed each. So Overall here- number 42. Overall, yeah. So here different fees are there, na, according to the individual or who is Okay. filing. See, if they need the documents in printed format or along with CDs and discs, it's a different cost. If it is only on the papers, it's a different cost. There will be two rows. Yeah, I guess this last one in this one. 42 it is. Huh? Row number 42. Yeah, yes, it's 42. It is. 42. Yeah. 47 and 49. These are related to register. 42 for certifying office copies and the printed. Huh. And this is about for natural person 800. 800. Okay, candidates, please list down this one. Okay.
So ये भी क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में कि फीस रिलेटेड. ओके, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. इट इज रिलेटेड टू फीस. Ma'am, please confirm it once. You can only tell us, like, is it for row number 42, 47, or 49? It is row number 42 for certifying office copies printed each. This one. So Okay. note down this row 42. And Ma'am, also I note think down, this is old one document, because now there are only two categories. True, it's talking about after only e-filing, amendments, you are e-filing and physical filing is there. In e-filing, they're charging natural person 800 and other than natural person is 4,000. And physical filing, it's 880 and other than startups, it's 4,000. 4,000. That is fine. We can just omit the middle row. Yeah. Okay. Okay, as per the amendments, you can write down. Okay, and you have to highlight this one or note down. Okay, candidates, see this web page, that is INPASS is there, INPASS. Okay, Infosys. so INPASS is Indian Patent Advanced Search System. So in this INPASS, what you can search, that is you can search here the patent search, which is granted or publish patents, you can search here. So here is different type of criteria you have to apply here, that is on the basis of application number or patent number or abstract or title or inventor name or priority date. You can type here and you can search the document related to that patent. Okay. Second one is the patent e-register. Here you will get after grant of the patent is forwarded towards the e-register and all the documents related to it you will get here. Application status here you will get, and this one is the help section. Okay. उसके बाद क्या होता है देखो, the public has the right to inspect the register only during the office hours and the certified copies of the register, okay, certified copies of the register with the seal of a patent office are provided to them upon paying the prescribed fees. Okay, it is given in the schedule. The prescribed fees to be made mentioned under the first schedule as per the rule 95 of the patent rules 2003. The register, so always what will happen now, ki you have to look the sections or read the sections with rules, so you will understand it better.
the register shall serve the prima facie evidence. Okay, so it is served as a evidence. Okay, as per the Indian Evidence Act. So it is the prima facie evidence of any matters required or authorized by or under this act entered therein. If the record of particulars is kept in computer floppies, dictates, or in any other electronic form, or power of the public, okay, so we cannot say ki it is only in e-register. So some sort of data is also put in computer floppies because there is a larger amount of data. So on only that e-register server, we cannot put all the data. So some data is printed on the floppies, that is a magnetic printing is there. So it is in the basis of computer floppies or on the dictates or in any other electronic form हो सकता है. Okay, in any other या फिर जो भी advance आएगा उनके पास, तो वो update कर देते हैं, उसके अंदर they will fill it. Power of the public to inspect the register shall be deemed to have been complied with if the public is given access to such computer floppies, dictates, or any other electronic form or printouts of such record of particulars of inspection. Okay. So the background sound is there. What is happening? There is someone's mic is on mute. Okay, okay. Please mute your mic now. Okay. Huh. Okay, the question is also asked related to this one, that is the data which is available at e-register and how we will get that data. Okay, so the question is also maybe asked related to this one. So you note down that question and prepare for that. Okay. So this data is also which is given at e-register, that is acts as a evidence, prima facie evidence. Okay, so it is a very important point. So in fill in the blanks, they can ask this type of questions also. So note it down. Ma'am, could you please repeat the first question? First question. Okay. This one. So you have to see. So in this paragraph, what the clue is given, if the record of a particular is kept in computer floppies or dictates or in any other electronic form. Okay, so in this way, what we can say that it is not only on the e-register, it is also on the data is also provided or it is secured in computer floppies or dictates or any other electronic form. Okay. So how the data is saved in the register, that is in 3 different forms, that is computer floppies or dictates और जो भी रिसेंट इन्वेंट हुआ होगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जैसे सेव कर सकते हैं इन दैट डिवाइस दे कैन स्टोर. ओके, सो ये जो पॉइंट है वो नोट डाउन कर लीजिए आप. ठीक है, हो गया. हेलो. Yes, ma'am. Okay. And the second question which can be asked
related to the evidence, that is Indian Evidence Act, that is it served as evidence, true or false में पूछा जा सकता है, that is this documents provided by register, is they are eligible as evidence or not. So yes, they are eligible as a prima facie evidence if the true copy of that printouts is there, then we can claim that one as a evidence. Okay, so note down this point also, this one. हो गया? Yes. Okay. The next point is when the register of patents or any part thereof is in computer floppies, dictates or any other electronic form, the person authorized, okay, जो controller ने authorize किया हुआ है person, the person authorized by the controller under sub rule 3 of rule 88. Can anybody tell me that what rule 88 says? Rule 88 उसका sub rule 3, that is the clause 3. Is anyone aware about that? Ma'am, it says that I'm reading out. Yes. Like the register may be in electronic, maybe electronic register or in the form of floppies or diskettes or any other electric form. It shall be maintained and accessed only by the person who is duly authorized by controller, and no alteration or entry of any entry or rectification of any entry in the said register shall be made by any person who is not authorized by the controller. Yes, true. So the authorization must be needed, and the authorization is done by controller. Okay. So controller generally authorize की नहीं करता है, जो भी agents होते हैं, okay, and they are registered, so they are authorized. या फिर अगर सपोज किसी डायरेक्टली एप्लीकेंट ने फाइल किया है पेटेंट और उनको ऑथराइजेशन है, then he can also do, but without authorization cannot, it cannot possible. So the secrecy is also maintained, which is very important factor. Okay. So ये पॉइंट समझ में आ गया आपको, दिस पॉइंट? हाँ बताइए, सबको समझ में आ गया या कुछ डाउट्स है? ओके, ठीक है, अगर कुछ डाउट होंगे तो आप बाद में भी पूछ सकते हो, ठीक है? ओके. So can anybody tell me the difference between appellate board and appellate tribunal? I think appellate board has been dissolved. So after that, appellate tribunal has come into existence, and Okay. there all the appeals are whatever appeal matters are there, we are taking appeals to appellate tribunal now. It is like quasi government organization. Semi government, yeah. Yes, semi government Almost. organization.
Okay. Huh. Quasi. Okay. And it is established at Delhi High Court, I guess. Okay. So why the tribunals are formed? Can anybody tell me? Well, courts are already overburdened with cases. That is why government has this solution of constructing Good. tribunals where all these matters are taken. So for the expedited procedure, they want tribunals. Yes. Yes. And Yes. just to less down the burden of courts. Yes. Yes. That's good answer. Okay. The patent rule 2003 with respect to rectification of register by the appellate board. Okay. So, the controller may require such proof of the alteration as he may think fit before acting on a request to alter the name or nationality. Okay. So generally what will happen when we file the patent? So there is the criteria that we need to file. So one minute, I will show you so you will understand better. So हाँ सबको ये स्क्रीन दिख रहा है आईटी इंडिया का? Yes. Okay. When you go to this, then go for the comprehensive e-filing. Okay. After that, go for this one, e-filing patents. Okay, this one. So I am also registered patent agent, so my account is already there. Okay, so let's see what is there. Here forms. So there are different types of form you have to fill. जब हम form 1 भरते हैं ना, so see what they are saying. If your invention is based on any research information or a biological resource obtained from India, prior approval of National Biodiversity Authority, that is NBA, is required. Actually NBA का authorization लगता है, is mandatory for a patent under section 6 of Biological Diversity Act 2002. Okay. So अभी अगर हम नहीं कर रहे हो, then we will go for if we are going for MBA, then go for this one, otherwise proceed to e-filing. ठीक है, अगर इस तरह से हमने चले गए, then this one, the application will come in this way, that is form 1, which is very necessary. ठीक है, जब हम ये form 1 fill करते हैं पूरा, so here you can see what is the data, type of application, type of specification. So applications are this type of convention application, divisional, conventional application, divisional ordinary application, divisional PCT national phase application, ordinary application, patent of addition for conventional application, patent of addition for ordinary application, patent of addition for PCT national phase application, PCT national phase application. So this type of application, how many types? You can count. 7. 9. 9. Okay. So आपको अगर ये लिख के लेना है तो you can write down. इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि कितने टाइप ऑफ एप्लीकेशन होते हैं, उसमें डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए आपको. ओके, प्लीज नोट डाउन. ओके,
ठीक है, हो गया आपको? Yes, ma'am. ओके, किसी को टाइम चाहिए थोड़ा बहुत तो? Yes, yes. ओके, हो गया ना सबका? Yes, ma'am. हाँ, ओके, ठीक है, we will proceed now. So suppose I am filing just ordinary application. Then specification, suppose I am filing provisional and 10 pages. Complete provisional specification description part. If suppose I have 10 pages, just आपको दिखा रही हूँ as a demo. So claims, number of claims, suppose I have 10 claims. Number of pages, suppose I have 2 pages. Abstract, 1 page. Number of drawings of pages, suppose I have 10 drawings. Okay, suppose 5 drawings. Number of drawings, suppose 5. So we don't have sequence listing page, so no need to fill that. Ma'am, but in provisional we don't have claims, right? हाँ, in provisional we don't have claim, but यहाँ पे हमें estimate देना पड़ता है. Oh. ओके, हाँ, तो रफ जो एस्टिमेट होता है वो we have to put. ओके, हाँ, अगर सपोज हमारे क्लेम्स है कुछ 2-3 पेजेस के एंड सपोज 30 पेजेस से ऊपर पूरा पेजेस का कैलकुलेशन हो रहा है तो उसका फीस अलग से लगता है एंड क्लेम वाइज भी फीस अलग से लगता है अगर क्लेम्स बढ़ रहे हैं तो. ओके, So even while filing provisional, we need to fill some figure over there. हाँ, the yes, number of yes. claims. हाँ, You yes. cannot put 0. यस यस यस, हाँ, अप्रोक्सीमेट तो डालना पड़ता है वहां पे कि हमारे कितने क्लेम्स होंगे और वो सब कुछ. ओके, यहाँ तक पता चला आपको? ये समझ में आ रहा है ना? ठीक है. सो यहाँ पे पुट कर दो आप टाइटल ऑफ इन्वेंशन कुछ भी जो भी है, सपोज कंपोजिट लॉकिंग मैकेनिज्म, एड्रेस ऑफ सर्विस कुछ तो दे दो, कुछ भी, ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट भी डाल दो कुछ भी, ठीक है. डिस्क्रिप्शन वो कॉपी पेस्ट करके डालना पड़ेगा यहाँ पे. एंड क्लेम्स का इट इज नॉट नेसेसरी बट ठीक है. देन ऐड एप्लीकेंट्स में जाते हैं ना. हाँ, सो आई वांट टू शो यू दिस वन. व्हेन यू ऐड द एप्लीकेंट, व्हाट दे आर asking, that is they are asking for the gender. Suppose the female applicant is there. Applicant type, they are asking for type. So there are different types you can see: natural person, other natural persons, then small entity, startup, educational institution. So इसके अकॉर्डिंग फीस भी चेंज होता है, जो आपको पता है कि आपने शेड्यूल में देखा है कि फीस कैसे चेंज होता है. आपने गौर किया होगा उसके ऊपर. Yes, yes. ओके, हाँ हाँ. सपोज नेचुरल पर्सन लिख देते हैं हम. एप्लीकेंट का नाम डाल दो कुछ भी. So in this one, ma'am, if can you brief what does other natural person comes under? अदर देन नेचुरल पर्सन मतलब वो कुछ कंपनी हो सकता है, फर्म का हो सकता है, या फिर हाँ, मतलब इस टाइप में. Okay, then small entity is also a company, right? And startups are like. No. There is a very big difference between small entity, startups, educational institutions, and in companies also there is different types of things. That is a single person company is there.
और it is the association और Hindu undivided, मतलब क्या है उसके हिसाब से है. Even the MSME definition is changed. So according to turnover, the MSME definition, we also know about that, I think. Okay, I was coming more from like small entity. The SMS will come under small entities, right? Small and medium scale enterprises. Okay, 1 minute, I will show you one more doc. एक्चुअली हम Zoom यूज ही नहीं करते हैं तो इस पे ठीक है. If it is not handy, you can share offline the link. No problem. We can get it from the ISRDT. No, the new tab is not coming here. It is not showing how overlapping is there. This one. You can just cancel this- this. Cancel this. I think you can access for that. Okay, 1 minute. MSME. Okay, you can see this one, update a new MSME definition based on investment and turnover. So accordingly कि हम उसका differentiation होता है हर एक चीज का, जैसे कि माइक्रो स्मॉल मीडियम डिपेंड्स अपॉन टर्नओवर लिया है उन्होंने. सो अगर कोई कोई कंपनी आ रही है हमारे पास, तो हमें पहले देखना होता है कि वो इंडिविजुअल पर्सन फाइल कर रहा है या फिर कंपनी फर्म फाइल कर रही है, 4-5 लोगों का फर्म है, या फिर स्मॉल एमएसएमई में भी वो कौन सा है, कौन से टाइप का है, माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, कौन से टाइप का है, वो इसके अकॉर्डिंग होता है. दैट इज टर्नओवर एंड इन्वेस्टमेंट. ओके Yep, got it. ओके, ये आर्टिकल पढ़ लो आप तो आपको समझ में आ जाए. Sure. Thanks. Just could you paste that link on the chat? हाँ ओके. नहीं, आप नेट पे सर्च कर सकते हो, इट इज इजीली अवेलेबल. पीआईबी पे मिल जाएगा आपको. Sure. Okay. ओके, सो यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए. Ma'am, in case of others, like if applicant is a company, then okay. Yes, tell me now. So what to put in gender? We need to go for other, right? Other, yes, other. Ma'am, other is different, right? Suppose if you're putting the applicant type is other than natural person, so how we can gender, then genders is other में नहीं आएगा. Sorry, it is for okay, transgender या फिर जो भी वैसा भी है. नहीं. Suppose if you put the other than natural person, the company you cannot discriminate the gender, right? You cannot. Yes, that is like an entity there. Yeah. Now, in case if we are putting that, what do we have to select? That's what I'm asking. Ma'am, if you can select the applicant type as other than natural person, I think you no need to select the gender because it's not mandatory fields. You can see this is not mandatory fields. There is no asterisks over there. Correct.
Correct. Okay. ओके तो कौन से पॉइंट पे थे हम? नेम एंड नेशनैलिटी. ओके, सो नेम इज आल्सो देयर एंड नेशनैलिटी इज आल्सो गिवन. सो अगर ये दो चीजें हमें चेंज करवानी है, ओके, अल्टरेशन करना है उसका, तो उसका एक रिक्वेस्ट देना पड़ेगा हमें कंट्रोलर को. यस, the controller may require such proof of the alteration as he may think fit before acting on a request to alter the name or nationality. अभी मुझे और एक चीज बता दीजिए कि जो नेशनैलिटी और डोमेसाइल है, so what is the difference between these two terms? Because the generally nationality is asked only. Could you come again? Can you repeat the question? My question is that what is the difference between nationality and domicile? Oh, like nationality can be where you have a passport, you hold a passport, but domicile can be the place where you took your birth. It can be different in some cases. Okay, and why we need Like- to alter the nationality? Like if a person because of his parents job transfer or somewhere he borns in Dubai, okay. But he both of his parents holds Indian passport. He will be still be called as Indian and as a nationality. But his domicile he can also hold Dubai passport since he took birth in Dubai. So he can have two nationalities. Yes. Okay, that is a good answer. And the name change, अगर हमें किसी reason से नाम change करवाया, then we can also do that one. But we will give the proof to that controller. Okay. उसके बाद क्या बोला है देखो, if a patentee makes a request in writing along with the fee payable for entering or additional address for service in India, जो मैंने आपको पहले बताया था एड्रेस फॉर सर्विस आता है, एंड दैट इज आल्सो ई रजिस्टर में दिया जाता है एड्रेस फॉर सर्विस, जो कि जनरली अभी पेटेंट एजेंट का था, मतलब जो खुराना एंड खुराना का था, जो मैंने दिखाया था एक केस आपको. ठीक है, अगर वो आपको एड्रेस फॉर सर्विस अगर चेंज करवाना है देन यू कैन डू आल्सो. उसका फीस लगेगा कुछ जो शेड्यूल में दिया है, और आप वो चेंज करवा सकते हैं. क्योंकि क्या होता है कि जो एड्रेस दिया हुआ है ना, वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं. ठीक है. Yes. उसके बाद देखो क्या बोला है, if the controller is satisfied that the request should be allowed, he shall have the additional address for service entered in the register. ठीक है. सो ये सब कुछ जो कंसेंट जिसका लगता है, दैट इज द बाय कंसेंट ऑफ कंट्रोलर it will happen. This is enunciated under the rule 94 of the patent rules 2003. ठीक है. So can anybody tell me the rule 94? It is about alteration of address. हाँ, यस. सो जो सेक्शन में दिया होता है, जब हम रूल पढ़ेंगे उसके साथ, देन व्हाट विल हैपन कि सेक्शन अच्छे से पता चलता है हमें कि सेक्शन में क्या दिया है. ठीक है. ठीक
ठीक है, आप ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, रूल 94 का। और कीवर्ड उसमें लिखिए कि क्या करना है। अगर एड्रेस फॉर सर्विस चेंज करवाना है देन इट इज रिलेवेंट टू रूल 94। ओके, हो गया आपका? Ma'am, which form is used here? एड्रेस फॉर सर्विस। ओके, यहाँ पे देखना पड़ेगा। आपका फॉर्म्स का लेक्चर हुआ है क्या? हेलो। नो मैम, स्पेसिफिक ऐसे फॉर्म का नहीं हुआ कोई लेक्चर। ओके जैसे ओके, सेक्शंस जा रहे हैं वैसे बता रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अगर ऐसा कुछ है कि इफ द नो अदर फॉर्म इज प्रिस्क्राइब्ड देन वी हैव टू पुट द फॉर्म 30। ओके, तो यहाँ पे पहले देख लो आप कि चेंज ऑफ द एड्रेस, अगर कुछ चेंजेस करवाने तो हाँ फॉर्म आई थिंक 16 भरते हैं हम लोग। अगर इफ नो अदर फॉर्म इज प्रिस्क्राइब्ड ना देन इट इज फॉर्म 30 होता है, 30 होता है। So you can see this form 16, the application for registration of title, interest in a patent or share in it, or a registration of any document pursuant to affecting proprietorship of the patent. So it is form 16. नहीं, ये तो ओल्ड दिख रहा है मुझे। ठीक है, दिस वन फॉर्म 13 नोट डाउन कर लीजिए। फॉर्म 13 है।
ओ शिट, किधर से आ गया? ठीक है, आप ये जो सारे फॉर्म्स है ना, इसका थोड़ा सा पढ़ लीजिए। स्टार्टिंग में फॉर्म 30, सब रूल 2 of rule 8 to be used when no other form is prescribed. ओके, ये इतना लिख लीजिए फॉर्म 30 एंड उसके आगे दिस वन, द हाइलाइटेड पोर्शन, दिस वन. ओके, and after that write down this one, that is sub rule 2 of rule 8. So here purpose of request is you have to put here, and the details of the request you have to put here. Okay, so in the case of amendment, आपने लिख लिया है क्या ये फॉर्म 30? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. ओके. हाँ, तो आपको समझ में आ गया फॉर्म 30 कब यूज करना है. अगर कोई दूसरा फॉर्म प्रिस्क्राइब नहीं किया है एंड आपको कुछ करना है चेंजेस, देन यू हैव टू, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा फॉर्म फिल करना है, देन यहाँ पे ये फॉर्म है, उसमें जो है डाटा देना है, दैट इज पर्पस ऑफ रिक्वेस्ट, यू हैव टू पुट, देन डिटेल्स ऑफ रिक्वेस्ट हियर. ओके, एंड अमेंडमेंट के लिए फॉर्म 13, व्हाट यू आर आस्किंग फॉर दैट अमेंडमेंट्स. ओके, सो यहाँ पे अगर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में कुछ चेंजेस करने या फिर डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू दैट कंप्लीट स्पेसिफिकेशन चेंजेस करवाने, देन फॉर्म 13 यूज किया जाता है. बट जनरली आई विल सजेस्ट दैट यू हैव टू डू or file the form 30, okay, instead of 13 in this case. Okay, if you want to change the address, अगर आप पेटेंट ऑफिस कॉल करोगे तो ये वो लोग बोलेंगे फॉर्म 13 फिल करना है, बट उनको एक्ट का उतना पता नहीं होता है, तो फॉर्म 30 वहां पे आप यूज कर सकते हो, फॉर्म 13 नहीं करना होता है. ओके, तो ये केस मेरे साथ भी हुआ था, तो इसीलिए मैं आपको बता सकती हूँ ये चीज. ठीक है, सो सेक्शन 57 जो है ना, सो यू हैव टू रीड दिस वन, सेक्शन 57. पहले ये नोट डाउन कर लीजिए आप फॉर्म 13 का. तो मैम एड्रेस ऑफ सर्विस और नेम नेशनैलिटी अगर ऑल्टर करना हो तो फॉर्म 30 है, 30, एंड एड्रेस ऑफ सर्विस भी करना है तो फॉर्म 30 ही है, राइट? वो तो फॉर्म 13 जो है वो सिर्फ अमेंडमेंट्स के लिए है ना? हाँ हाँ, जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में जो अमेंडमेंट्स लगेंगे ना, उस चीज के लिए. एंड ये तो एनी सेक्शन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड देयर टू, मतलब कौन से? मतलब उसका क्लेम्स का है या फिर उसके डिजाइन ड्राइंग से कुछ, मतलब उसमें कुछ चेंजेस करवाने हैं. ओके ओके. हाँ, या फिर सीक्वेंस लिस्टिंग है कुछ देना है अलग से. सो ठीक है, ये आपने सेक्शन 57 पढ़ा है क्या? यस One मैम. minute. इसके ऊपर आपका मतलब हुआ है कुछ? सेक्शन 57 आपको पढ़ाया गया है क्या इससे पहले? Yes, yes.
ओके, हाँ हाँ, तो आप बताओ ना मुझे, हाँ, क्या क्या पढ़ा है आपने इसमें? हाँ, मैंने डॉक्यूमेंट ओपन भी किया है, आप भी बता सकते हो। Uh, um, in case we have any application or any complete specification, and if the controller asked us to amend that application after like examination, that this specification like Tell me in other language, you can also tell me what you it's not a मतलब full language. हाँ, अभी जैसे उन्होंने बोला कि आपके if in your background you should put this reference, so you will be amending that application, and for that you will use this form 13, and it will go under section 59 57, 57, okay, हाँ हाँ, right? To add up any reference or to Control. amend any claim, like if there is like a very broad claim, you need to narrow down it, then you are amending that complete specification or the claims. Okay, and the way you said drawings, if you want to put any drawing or you need to lessen any feature in that drawing, you can always amend that using under section 57 under form 13. With तो respect इससे to कुछ point which I have to the amendment of application, there could be two amendments will be there. One is the voluntary amendment, and second one is the examiner which asks for to amend Right. any supporting or make sure that changes which is suggested. Voluntary amendment in the sense applicant needs to be made some changes or supporting sections which will add strengthen to your application. That is called voluntary amendment. And the examiner amendment is, suppose if the examiner will suggest to change the title which is not suitable for your claims which you are describing. So accordingly, he will suggest any title, or we can ask the applicant to change the title or make the changes in the claim. Suppose one of the example I got to know is if the claim is having the comprising and the examiner is gone through the examination report and feels that it is not the preamble and the comprising is not suitable, so you can go with the characterizing element. So we can amend that claim with suggesting his opinion. So accordingly, the applicant will make the changes with respect in their application and submit to the examiner evaluation. That is after FER, that is we are filing the first examination report, and with that we are also amending that Correct. claim. That is okay. Correct. Yeah, good. The answer is very good. Even before getting the FER, we ourselves found some typo errors in the document, which may alter the entire meaning of the invention. We can request the controller to allow us for amendment of this application and the related documents. Muralidharan, your voice is not visible. It is not clear. Can you use headphones? Now again, see, if we found some typo errors in the application and the specifications which you have furnished, so which can alter the entire meaning of the invention. For example, some meaning you would have thought about the invention, but in writing you would have written in the wrong way. So if you want to change that, we can request the controller to allow us to amend the specification or the applications or the necessary documents which we found some typo errors. That kind of amendment is possible. Typing errors can be amended, na? So you can put it in form 13. Yeah. You can put it in form 13. Major changes, major amendment cannot be done unless it is really warranted. Major amendments actually the controller asks to amend it. So you have to amend it.
because he is asking to amend it. No? So that's why. For example, in the application, we have forgot to mention about the foreign details. Foreign details are missed out in the application, which is a major requirement. So that has to be amended, right? Like, suppose if I applied for foreign patent, if that is I missed it here, and if I'm not, I'm supposed to tell the information what is going on in the foreign application also. There is some other form for that, I guess. Yeah, that's also missing. Then I can amend the application and then file it. No, what will happen now? Generally, controllers, the amendments are not that much of bigger, but he will help us to amend the claims, because that's why we have to amend it. But if the scope of your invention is totally going to change, and in that case, if you don't want to amend it according to that, so you can also you have to convince that controller that key it is in this way only. So in the FER it should be in that writing manner. We have to put that things. Yes, you are right, absolutely. So what So you I are will show. mentioning about, sir, to the foreign application. So once you file the application, so it will have the 6 months timeline to submit any information and undertaking regarding to the foreign application. You need to submit the form 3. If it is any invention you are going to taking the foreign filing, you need to give that information to the patent office within 6 months from the date of filing with the form 3. Yes. And undertaking is required. It is essential actually. So I will show you one thing. 1 minute. So in this way, the claims are amended. जो कंट्रोलर ने सजेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंगली हम वो चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे स्कोप के अंदर भी आना चाहिए. ओके. ये आपको समझ में आ रहा है? Yes. Yes, ma'am. जो FER होता है, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट, इट इज इन दिस वे. You can see this one. Application number is included. Date of dispatch. जो हमने अभी देखा था ना ई रजिस्टर में, उन्हीं का है. सो हमें तो पता है कि क्या क्राइटेरिया होता है इंडिया में पेटेंट ग्रांट होने के लिए. वो नोवेल होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, जो ये 3 क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए. ये तो सबको पता ही होगा ना? Yes. हाँ. और ये कौन से सेक्शन के अंडर आता है? अंडर सेक्शन 21J. हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके. तो अभी देखो इसमें क्या प्रॉब्लम था FER में. दैट इज क्लेम 1 to 6 novelty S. So they are saying that claims are novel. So novelty है. Inventive step है क्या?
So they are saying that inventiveness is not there. Okay. Industrial applicability है क्या? Then it is there. So हमें ये वाला जो है inventive step वो prove करना है. ठीक है. यहाँ पे देखो क्या दिया है, नॉन पेटेंटेबिलिटी अंडर सेक्शन 3 if yes one question, madam, one question. हाँ, yes, tell me. When you are saying novelty, yes, then if it lacks inventive steps, then how can we say it's novel? No, novelty means the novelty is there, the patent invention is new. Okay, but inventive step is not there, it is not inventive. It is not satisfying the condition of non-obviousness. These two things are very different. So what is our first criteria? That is, it should be novel. Novel means कि throughout the world, throughout the globe वो नया होना चाहिए. Not only in India, throughout the world, the application or the जो idea है, जो patent है, वो उसका नया होना चाहिए कुछ भी. मतलब ऐसा पहले कभी बनाया नहीं है. So novel है या नहीं वो कैसे पता चलता है? जब हम पेटेंटेबिलिटी सर्च रिपोर्ट निकालते हैं और उससे रिलेटेड सिमिलर वो हमें नहीं मिलता है. अभी इन्वेंटिव स्टेप नहीं है तो क्यों बोल रहे हैं पता है क्या? बिकॉज दे आर सेइंग कि इट इज अ मेयर कॉम्बिनेशन, कुछ भी ऐसा 2-3 चीजें मिक्स करके कुछ बनाया होगा उन्होंने, या फिर अदर चीजें भी हो सकती है. अभी यहाँ पे देखो उन्होंने कौन से लगाए हैं, E, J and P लगाया है. सो सेक्शन 3 यू हैव टू सी सेक्शन 3E, 3J and 3P. बताइए मुझे, आपको आई थिंक आपका हो चुका है ये चीज. Section 3P is like that turmeric example because of the traditionally knowledge. ट्रेडिशनल नॉलेज में वो आता है. एंड यू कैन आल्सो सी द दिस व्हाट इज द टाइटल. What is the title? Madam, it's a traditional knowledge, then it cannot be novel, no? So for your question, Muralidharan, just a simple example would be a chair with 4 legs and a chair with 3 legs. It will still be novel, okay? But it cannot be an inventive step because it is obvious. Yeah. A chair can also have 3 legs, okay? Only thing is you need to prove non-obvious thing with a person skilled in the art to satisfy the inventive step. No. My question is here, the traditional knowledge and novelty. So you are saying novelty is yes, but then you are discarding the patent application based on traditional knowledge. Okay. Then the traditional knowledge is there, then how you can call it as novel? Traditional knowledge can be applicable in between 1 to 12. Any one of the claim can be cannot be possible because of the 3P. Okay. If you see the 1 to 16 are novel, okay, and then he mentioned under 1 to 16 there can be one particular claim which can be novel. Under 1 to 12 there is certain claim which is under section 3P will not be possible to be obtained. Okay, not all 1 to 12 will fall under EJP. Even if under 1 to 12, even if one claim falls under 3P, they will still reject that. So entire patent is rejected, right? Yes, that is where you need to go through your application again and you need to amend your application to satisfy this EJP. Okay, in case of turmeric, what will happen now? They filed the patent, okay, but it is under the as we know that कि इंडिया में तो turmeric बहुत सालों से यूज किया गया है and we have a written documents related to it कि it is already Ayurvedic medicine. So उसका patent नहीं हो सकता है. But if suppose we are using some type of different combinations or different type of what we can say, what 3D, can anyone tell me 3D, section 3D? Please read see, it. it's an admixture, huh? It's an admixture. No, 3D, what I am telling you, it's interesting. It's different. I mean, 3D is just
existing. New property of non-substance. Yes. 1 minute. If a discovery is made from a known substance, then it Can must have enhanced new efficacy. form of known substance. Form of known substance. Okay, so please in detail ये पढ़ लीजिए because it is very important. Section 3D क्या बोल रहा है? The mere discovery of a new form of a known substance which does not result into enhancement of known efficacy. ठीक है, हमने कुछ नया बनाया है टर्मरिक को लेके ही, लेकिन उसका efficacy बढ़ नहीं रहा है. ठीक है, of that substance or the mere discovery of any new property or new use for a known substance. Okay, जैसे कि हमने सपोज जो गोली है ले रहे डिस्प्रिन ले रहे और वो किसी और चीज के लिए भी यूजफुल है ऐसे पता चला हमें, then we cannot patent it. और the mere use of a known process. Okay, known process है वो भी नहीं हो सकता है. मशीन है, apparatus है, unless such known process resulted in a new product or employs at least a new reactant. So इसको highlight करो, a new product or employs at least a new reactant. So a new reactant ये जो keyword है, it is very important. अगर हमने traditionally अगर हल्दी ले ली, okay, and suppose हमने onion ले लिया है, and we will make some combination of it, and we will make some process, and after that we will extract some component, and that component is beneficial for the cancer treatment. Okay, so we will make the liquid out, we will make the serum out of it, which is beneficial at treating the cancers. Okay, cancer cells. So उस चीज में if the efficacy is good and we are going to make something different, na, a new product is resulted into the new product, so it is not a traditional one, although the parents are traditional. So haldi and onion, we know in the traditional knowledge that they are having some benefits, but what we make out of that by means of some different process we are making that, so we can claim that process, and also as the process is claimed we can also claim the product. Okay, so that is the difference, that is section 3D saying. What it says, so it will resulted into a new product or it or employs at least one new reactant. ठीक है, अभी यहाँ पे दिया है explanation for the purpose of this cause, salt, esters or ethers, polymorph, metabolites, pure form, particle size, isomers, mixture of isomers, complexes, combinations and other derivatives of known substance shall be considered to be the same substance unless they differ significantly in properties with regard to efficacy. तो ये efficacy जो शब्द है वो आपने तो कितने बार सुना होगा पता नहीं, because कोरोना में जो वैक्सीन आया है वो तो पता है. efficacy ये जो शब्द है, मतलब ये जो वर्ड है वो तो पता ही होगा आपको कि उसका मीनिंग क्या होता है. Efficacy means for the same drug, if it is you having an advanced drug which can take a lesser amount of quicker recovery and lesser amount of drug usage. Yes, it's called yes, efficacy. Yes. आपको section. For example, if you're using one tablet and that tablet is an existing tablet, and you invent a new tablet derived from the existing tablet, which can at a lesser amount of dosage you get a faster recovery. That is efficacy. Yes. Good answer. So अभी आपको सबको समझ में आ गया section 3D क्या है? Yeah, sure. Okay. So the objections are based on section E, that is a substance obtained by a mere admixture resulted only in aggregation of properties
of the components thereof or a process for producing such substance. Okay. So उन्होंने बोला है कि ये mere admixture है, मतलब कुछ भी आपने मिक्स कर दिया है, ऐसे उन्होंने बोला है. Then after that, what is it? I think P objection और कौन सा था? I का था ना? Section E, I और P था, right? So P में देखो क्या बोला है? An invention which is effect in traditional knowledge or which is an aggregation or duplication of a known properties of traditionally known component or components. I में क्या है? Any process for medical, surgical, curative, prophylactic, diagnostic, therapeutic, or other treatment of human beings, or any process for similar treatment of animals to render them for a disease or to increase their economical value or that of their products. Okay. E, J, So and P. sorry, J का है objection. Yeah, E, J, P. हाँ, J है. Okay. J का, J में क्या है? The plants and animal in a whole J or में any part thereof other than microorganisms. So microorganism को हम कर सकते हैं, but other than microorganism होगा तो it is not possible. But including seeds, variety and species, essentially biological processes for production or propagation of plant and animals. It means, ma'am, this in Budapest Treaty, this microorganisms come? No, in Budapest Treaty, it's Yes, only yes. genetically modified. You have Okay. यूएस का जो है ना, आप एक बार एक्ट पढ़ लो, मतलब because it is also, मतलब हम जब इंडियन करते हैं. Budapest Treaty, madam, the Budapest Treaty, it is a sample of genetically modified microorganism only can be deposited, right? Not the existing microorganism which you are doing. हाँ, existing का नहीं हो सकता है ना, कैसे होगा? Existing तो नहीं हो सकता. It is a discovery. It is a discovery. That is the main difference, na? To modify existing. If someone invented, discovered the existing microorganism, na, then it is called as a discovery. And या when वो you 3C के अंदर जाएगा, modify, right? 3C के अंदर जाएगा, right? हाँ, 3J भी लगेगा उसमें. 3C. 3C, the mere discovery of scientific principle of the formulation of abstract theory. हाँ, of any living thing. Right, C. मुझे और एक चीज पूछना था आपसे. अभी जैसे इंडिया में 3 क्राइटेरिया है, वैसे यूएस में कितने क्राइटेरिया होते हैं पेटेंटेबिलिटी के लिए? 3 ही रहता है. 3 ही रहता है. 3 है या 6 है, कितने है बताओ, आप सर्च करके बता दो. नहीं तो है. नहीं है. Novelty, non-obviousness और utility. But it is showing in the, this is the Indian Patent Act. नहीं, हमें यूएस का चाहिए. Yes. वाइपो पे देखो एक बार. It is saying US 4, में ma'am. It's saying 4 must needs to be follow the invention must be statutory, it must be subject matter eligible, and invention must be new and be useful,
and invention must be non-obvious. ओके और यूएस में कौन सी चीजों का पेटेंट होता है वो भी बता दो आप मुझे. So it will give the grant to that invention comes under if invention is anything related to process or missions, article of manufacturing or composition of matter. ठीक है आप बाद में बता देना मुझे यूएस में पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है. ठीक है और यूएसपीटीओ का साइट और वाइपो का साइट एक बार ठीक से देख लेना. आपको फॉर्म 13 का पता चल गया ना कि क्या है फॉर्म 13 and the Yes, section ma'am. related to it, that Yes, is section 57. Okay. Yes, ma'am. And form 30. Yes. Okay. So rectification of register by appellate board. According to section 117D, an application for rectification of register shall be made to the appellate board in prescribed manner. A person can make an application. ठीक है पढ़ लेते हैं पहले उसके बाद देखते हैं. According to section 117D, an application for rectification of the register shall be made. अभी मुझे बताओ rectification क्या होता है. Suppose there are joint For the applicants, joint yes, applicants for the patent. One of them is missing. One of them is missing. That one of the names of the applicant is missing in the register. He can approach the appellate board to include if he is not taken care by the controller. Okay. Anyone other than It is correction of any mistake. yeah. Okay. So rectification कैसे होता है देखो. According to section 117D, an application for rectification of the register shall be made to the appellate board in the prescribed manner. A person can make an application to the appellate board to rectify the register if he is aggrieved by any omission or absence of any entry from the register, or when an entry is made without any sufficient cause, or when an entry is wrongly remaining in the register, or when there is an error or defect in एंट्री एग्जिस्टिंग इन द रजिस्टर. तो ये सारे 3-4-6 पॉइंट जो है ना वो पॉइंटर्स में लिख के लो आप कि कब कर सकते हैं आप. दिस वन ठीक है. बाय एन ओमिशन ये फर्स्ट हुआ. absence of any entry from the register ये second हुआ. third, when an entry is made without any sufficient cause. Then fourth, when an entry is wrongly remaining in the register. Then fifth, when there is an error. And sixth, defect in entry existing in the register. But before approaching the appellate board,
The aggrieved person should approach the controller, and if it is not rectified, only he should approach the appellate board, right? Yes. If he's not got justice from the controller, then only he can go to next higher levels. Yes. That is appellate. So that is the point na, there, when the entry is wrongly remaining in the register, or when there is an error or defect in existing in the register. So without अगर application वहाँ पे controller के consent से नहीं हो रहा है, then he will can proceed to appellate board ना. But यहाँ पे देखो अभी appellate board का जो हमें पता है क्या हुआ है उसका. Madam, here I want to ask you one question. Is the appellate board is already constituted, or it is newly formed as and when the requirement arises? Appellate tribunal is the form because yes. No, my question is appellate board is formed based on the requirement or already existing appellate board? Only then I think we need to go through section 116 for that. I think opposition board is constituted as and when required. Appellate board is always Appellate board is already exists. It is exist or it is abolished? It is dissolved, ma'am. But so constitutional bodies कौन सी होती है वो पता होना चाहिए आपको. So you should understand the definition. Section 116 says it's already established as per Trademark Act 1980. Yes, that was my answer. So apart from only opposition board will be formed, rest all will be established right from the start. Even to form opposition board, initially the controller will hear to both the parties, and after hearing, if he feels that there is a need of opposition board, then only it will be formed. So you have to read this one: constitutional foundation and competence of tribunals. So अगर आपको वो डिफरेंस पता है कि मतलब जो अलग अलग टाइप के बॉडीज होते हैं और वो फॉर्म क्यों होते हैं, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट. अगर कोई बॉडी फॉर्म हो रही है और वो डिसॉल्व भी हो रही है, तो उसका क्या पर्पस होना चाहिए, मतलब किस टाइप की बॉडी होनी चाहिए वो. ठीक है. अगर एपलेट बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया है तो उसका मतलब क्या होता है. ठीक है, बता दीजिए मुझे कुछ. Means there is now it is not existing. हाँ, मतलब डिसॉल्व किया मतलब बाद में भी बना सकते हैं, उसके बाद डिसॉल्व भी कर सकते हैं. मतलब अकॉर्डिंग टू द नीड दे विल कंस्ट्रक्ट इट एंड आफ्टर दैट दे विल डिसॉल्व इट.
Means the So short then term. appellate board cannot be dissolved, right? Because it is existing under the Trademarks Act, right? Under tribunal Trademarks can be Act. tribunal Yes. can be formed and dissolved, but appellate board cannot be dissolved. It will be remain same. And Okay. tribunal can be formed whenever required, and it can be dissolved after that particular case. Okay. हो. And appellate board के साथ क्या हुआ ये बताओ. But is there any section under which appellate tribunal is mentioned, or is it only on case to case basis it will be formed? Because I am also searching for that, but I could not able to get anywhere. Only for appeals, I think it will be there. Appeal only appellate board is constructed. 117D. Contract searching tribunal. No, I don't think tribunal is given in the act. There is Yeah. some different document. PDF is there. In case I Okay. find it, I'll forward it in the group. Sure. Thanks. Okay. ये वाला आर्टिकल पढ़ लो आप. So, Ma'am, please share the link of this article. But this does not came into effect as of today, right? At least for this year. what are the reason for the failure of IPAB? Vacancies we feel नहीं हुआ था उसका कुछ case still. Also petition in the Supreme Court for extension of the term of the chairperson. So बहुत सारी चीजें हैं इसमें. Lack of efficiency. For example, the disposal rate was about 20 patent cases a year. So जिस काम के लिए बनाया है उस काम वही काम नहीं हो रहा है तो ठीक है. एपलेट बोर्ड में कितने मेंबर्स होते हैं बताओ मुझे. Could you repeat the question? हाँ, एपलेट बोर्ड में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं मैक्सिमम. 4 or 5, I guess.
7 तो नहीं होते ना? Controller, I think controller, examiner, and then technical member. टेक्निकल मेंबर एक रहते हैं, 2 रहते हैं? Technical member can be 2, 1 or 2, at least 1. आप maximum ट्रिब्यूनल का 2. बता रहे हो या बोर्ड का बता रहे हो? बोर्ड का। बोर्ड में कंट्रोलर होता है क्या? ठीक है, आप ठीक से सोच के बताओ या फिर सर्च करके बता दो, ठीक है? ये आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन है। ट्रिब्यूनल में तो जजेस है। So the technical member, he has to serve as a controller for 5 years, either held the position or functioned as a controller, right? Okay. ठीक है, बाद में बता देना। Sure. कैसा होता है ना कि अगर मैंने आपको अभी बता दिया ना तो फिर मजा नहीं आएगा आपको पढ़ने में। थोड़ा क्यूरियोसिटी जनरेट होगा ना तो फिर और आफ्टर कंफ्यूजन अगर रिजल्ट मिलता है देन वो दिमाग में रहता है वो चीज, ठीक है? ये 6 क्राइटेरिया, ये जो मैंने बोला था आपको, आपने नोट डाउन कर लिया? So I found one link which says like the abolition of IPAB and the cases will be routed to commercial and district courts. So the tribunal, what we are now talking about, so does that form under the district or commercial courts, or will it still be chosen by the members of the like the rules will remain same as the section 116, or will there be any other persons involved? That is what I am not getting for IPAB tribunal. ओके, आईपीएबी ट्रिब्यूनल जो है तो सबसे पहले मुझे बताओ कि कौन से टाइप का बॉडी है वो, तो उसी में आपका जवाब है कि बॉडी कौन से टाइप का है वो। Ideally, it should be similar to whatever is mentioned under section 116, like who can be the board members. No, there are different types of bodies ना, so किस मतलब अगर उसका हम ये करेंगे कि कौन से टाइप का है वो बॉडी, सो No, I didn't get your question. Anyone wants to take up? आप में से कोई मतलब यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है क्या? Madam, here one question, madam. Is appellate board is jurisdiction based or a central? I mean, it's common for all the 4 jurisdictions. When you say Yes, sir, jurisdiction, it's the state wise or for entire India? It is for entire India. Yeah, appellate board is for entire India. That's what I know as of today. बोर्ड बड़ा है वो चीज, ट्रिब्यूनल इज वी कैन इजीली मतलब वो कभी भी बना के वो मर्ज कर सकते हो, लेकिन अगर सपोज बोर्ड ही मर्ज हो रहा है देन बिग इशू होगा ना कुछ, सो
Yeah, that's where I could not able to map because the IPAB which was existing earlier, that was only one particular committee that was formed, right? Now, when it goes to commercial or district courts, so each district will have separate court, right? Or sorry, at least each state will have a district court, right? So if it will be solved under that district court, so then so are we increasing the IPAB's focus? Shouldn't we be dissolving the cases? I'm not getting that. No, अभी तो मतलब through tribunal ही काम होता है ना. So that is where I'm not getting that particular Hmm. tribunal's definition or the members formed for tribunal. I'm searching for that. हाँ, ट्रिब्यूनल Okay, में I will मिनिमम, search and get यस, back. मिनिमम इट विल नहीं, वो कैसा है बताया, वो बॉडी बना रहे, ओके, वो लोग, कुछ लोग हैं जो बना रहे बॉडी, ओके, एंड उनका काम होता है, तो उसके बाद में उसका वर्क डन होता है, बट ट्रिब्यूनल का मतलब ट्रिब्यूनल का बनाया हुआ है उन्होंने, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम ऐसे होता है, नॉट अ स्पेसिफिक कि 3 ही मेंबर होंगे या 4, सो उसका एक रेंज होता है. ओके, तो हमेशा रेंज बताओ आप, तो मिनिमम तो 3 मेंबर तो लगेंगे ही, और वो तो आपने बताया ही है मुझे कि कौन कौन, राइट? यस यस. हाँ, उसके बाद अगर टेक्निकल मेंबर बढ़ा रहे हैं, देन दे कैन इंक्रीज अप टू 5. ओके ओके. But the only thing I don't understand from the link is that it was dissolved because of the shortage of members. If we are again forming and looking for the same members, then it will be how they are identifying the resource. That is the confusion. Let's see. I will search back and I will get back to you if there is any query. Okay. Thanks for this. ठीक है, ये आपने नोट कर लिया है ना? ठीक है, हम आगे जाते हैं. Any document making any change to the title or interest in the patent shall be given along with the application made to register to change a change. This has been given under Rule 91 of the Patent Rule 2003. ठीक है. अगर कोई डॉक्यूमेंट, अगर हमें टाइटल में कुछ चेंजेस करवाने, या फिर अगर किसी का कुछ इंटरेस्ट है, सपोज लाइसेंस लेना है या फिर कमर्शियलाइजेशन का कुछ पर्पस है, ठीक है, अगर उस रिगार्ड्स में कुछ चेंजेस करवाने हैं, तो उसका जो डॉक्यूमेंट है shall be given along with the application made to the register to change a change. तो वो हमें उसको देना पड़ेगा ई रजिस्टर में ऐड करने के लिए, ठीक है. The appellate board has the authority to answer any question that is relevant or necessary or expedited to decide in relation to the rectification of the register. When an application is made by any person or rectify the register, a notice of such an application is given to the controller. Okay. Yes. Appellate board को क्या authority है? देखो क्या बताया उन्होंने, has the authority to answer any question that is relevant or necessary or expedite to decide in relation to the rectification of the register. When an application is made by any person to rectify the register, a notice of such an application is given to the controller. ठीक है, तो हमें कंट्रोलर को भी वो चीज बताना पड़ता है. नोटिस इज गिवन, सो ये बोर्ड से होगा, बोर्ड बताएगा उनको, ठीक है.
The controller has the authority to appear in such proceedings at his will or when he is ordered by the court to do so. When an order is passed by the appellate board regarding the rectification of the register, it shall be communicated to the controller, who shall in turn give effect to the order by making the necessary changes or amendments as per the direction of the appellate board. तो appellate board को और controller को साथ में काम करना होता था. Ma'am, as Mr. Shashikiran has mentioned about the appellate board as abolished. So Yes, all these abolished. directions we need to take in direction to the district courts, or how it will be, because the appellate board does not exist anywhere. So in the bill also, the parliament, they have mentioned there is no appellate board in the abolished, and they introduced the tribunal, IPAB tribunal. Same working mechanism will be going to the tribunal, or these mechanism details will be still there in the act. The act says 2003 this rules, मतलब उसमें तो ये included है, but when you go to the amendments ना, तो the alternative is that कि मतलब एक तो हाई कोर्ट से होगा या फिर IPAB ट्रिब्यूनल से ही होगा बेसिकली. इफ अगर सपोज ई रजिस्टर में कुछ लाइसेंसिंग का है एंड इन्फ्रिंजमेंट का कुछ आया है सपोज. What I understand from the tribunals is nothing but just district courts or commercial courts, right? Yes. See, the thing is, I think the exact functioning of the new system is not yet published anywhere from this search. So Okay. I think we may go back and search for some more time and see if someone gets something. We will share it with ISRD and it will be shared across the members. Because for now, whatever they are mentioning is, it is just showing up as like district courts and the this one, what do you call it? Commercial and district courts. Yeah. So now whether it will be remain the same as the IPAB functions, or will it be anything changes that they amend? So that amendment is yet to be published, I guess, because nowhere I found that amendment. अच्छा, अमेंडमेंट आपने ये सब देख लिया है अभी न्यूली जो अमेंडेड है वो? हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ मैडम, हाँ, मतलब हाँ, we need to okay. go in detail, so after class only we can do the search. Okay, ठीक है. मतलब अभी तक बस वो information मिला कि IPAB has been collapsed on 4th April 2021, which is very recent, and they have mentioned that any any certain cases which used to go to IPAB before 4th April 2021 should be passed to commercial or district courts. बस उतना ही दिया. Now whether it is applicable to entire district courts of India वो भी नहीं पता, or any choosed district courts वो भी नहीं पता. So that is not been provided in that link. So that's where we need to search in detail. Okay. और जब वो PIB में आएगा ना वो पता चलेगा, और IP इंडिया पे भी पता चलेगा वो चीज, मतलब वो नोटिस आ जाता है. So what I got to know, yes, so that's where 2021 अप्रैल से आज तक का जितने भी न्यूज देखेंगे ना पेटेंट ऑफिस में, वहां पे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है. So which means they may be still it may be still under process. It is approved by the government but still under process. नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आई डोंट नो बट आई स्टिल की रिवाइव करेंगे वो, बिकॉज because until and unless the amendment releases under the official gazette, we Yes. cannot We take cannot anything. comment. We cannot Yes. comment on that, right? Yes, right. So purpose of register of patent. Register of patent contains all the updated information regarding a patent that is granted. Okay.
अगर ग्रांट नहीं हुआ है पेटेंट एप्लीकेशन तो हम वहां पे मतलब उसमें कुछ नहीं मिलेगा, आफ्टर ग्रांट वो वहां पे अपडेट हो जाता है, ठीक है. इट सर्व्स एज अ डेटाबेस एंड प्राइमा फेसी एविडेंस फॉर एवरी प्रोसीडिंग्स इन्वेस्टिगेटेड अंडर द इंडियन पेटेंट्स एक्ट बिफोर द कंट्रोलर एंड द एपलेट बोर्ड. सो एपलेट बोर्ड का तो पता नहीं. When there is any change in the title, interest, or information contained in the patent, the patentee or the title owner is under the obligation to intimate into the controller so that he can make the necessary changes in the register. Okay, so he should inform to the controller before that. So that is the purpose of a register of patents. So if you want to note down this one. Otherwise, I will provide you the soft copy of this document. Yes, ma'am, done. A register of patents. The register of patent is dealt with the section 67 of the Patents Act 1970 at at the patent office. A register of patent is maintained which contains the name and addresses of the patents. It also contains the notification of assignments. Okay. Extensions and revocation of patents. Okay. So you already heard about these terms, that is what is mean by revocation of patents. Revocation का टॉपिक हो चुका है आपको चैप्टर? Yes, yes. Okay. So if the patent is revoked, then also there is the information related to it that contains ki revocation हुआ है, क्यों हुआ है, all these things, and the notification of assignments and extensions. So all these things are provided there. Apart from this, the particulars of orders which affects the validity or proprietorship of patent shall also be included in the register of patents. Okay. अगर लाइसेंसिंग वगैरह हुआ है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या कुछ ऐसे बॉन्ड के थ्रू प्रोप्राइटरशिप चेंज हुआ है, then all these documents are also included there. A notice of trust, irrespective of it being express, implied, or constructive, okay, shall not be included in the register. So what is not included in the register? ये भी पूछा जा सकता है question. So you have to ये इसका एक question बना के लिख लो. This one. A notice of trust, irrespective of it being expressed, implied, or constructive, shall not be included in the register. Ma'am, what does this mean? Okay. Yeah, I was also about to ask the same question. Yeah. Because when you go at the section 67, so the same terminologies it will contain, right? So you should understand the notice of trust. So what this clause means, notice of trust. Irrespective of it being क्या करना है उनको, express, implied और constructive. ठीक है, ये तीन चीजें तो पता है आपको, express, implied और constructive क्या होता है.
कंस्ट्रक्टिव मतलब कुछ चेंजेस किए हैं, एक्सप्रेस मतलब उनके खुद के ऑन द बिहाफ ऑफ कि उनको चेंजेस करने हैं कुछ, एंड इम्प्लाइड मीन्स tell me the meaning of implied in the legal terms. Forced to do. Yes. Okay. So a notice of trust means make it already. ठीक है, अगर किसी ने एक्सप्रेस किया है इम्प्लाइड और कंस्ट्रक्टिव ऐसा कुछ, ही वांट टू पुट द नोटिस ऑफ ट्रस्ट कि तो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द रजिस्टर, क्योंकि वो क्या होता है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन टू पर्सन, या फिर इट इज ऑन द बेसिस ऑफ अगर कोई नोटिस ऑफ ट्रस्ट दे रहा है कि ये चेंजेस करवाने, तो इट विल नॉट हैपन एक्चुअली अनलेस एंड अनटिल कि वो अगर किसी ऑथराइज पर्सन ने भी किया है द नोटिस ऑफ ट्रस्ट, तो उसके प्रोविजंस अलग है, बट अ नोटिस ऑफ ट्रस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और कंस्ट्रक्टिव, इट should not be included in the register because उसका नेचर चेंज हो जाएगा. Now, what is notice of trust? I just read it on Google. Like, correct me if I'm wrong. Is it a document that is like must be filed after someone's passing, or if someone is dead? No, before that it can also. Yeah, this document must be filed in the probate court, in the court where the deceased person lived at the time of their death. Okay, Probate. but यहाँ पे Just correct me if I'm wrong also. Notice of trust could be any POA, power of attorney. yes, it can be.
But generally, what will happen now? Power of attorney is given before the grant of the patent. Yes. Notice of trust is done by unauthorized person. It means notice of trust is different than power of attorney is different, right? Yes, power of attorney is that the applicant is given the right to that person. Correct. Correct. Yes, yes, yes. Notice of trust is a different type of thing, Okay. actually. Yeah. Everywhere it is like related to death only. So the power of attorney is nothing but you have to print this form 26 on the bond paper. Okay. So this is the form 26. वो authorize कर देता है, मतलब the applicant authorize you as a agent or the attorney for the prosecution. So it is in this way. और यहाँ पे हम सब कुछ डालते हैं, and after that we will get this the signed power of attorney, and after that we will submit it, that is scanned copy is submitted. Okay. ठीक है, आपको वो डॉक्यूमेंट मैं बाद में दिखा दूंगी कि कौन से डॉक्यूमेंट नोटिस ऑफ ट्रस्ट में आते। ठीक है। So this sentence is very important. So note down this one. So what we can do to avoid this type of problems? If suppose a notice of trust is related to the after death of a person who is inventor, and his legal रिप्रेजेंटेटिव और कैसे वो क्या कह सकते हैं, उसके वाइफ को अगर हमें राइट्स प्रोवाइड करवाने उसके, ओके, रिलेटेड टू पेटेंट्स, तो हम व्हाट आर द प्रोविजंस वी विल टेक, या फिर हम क्या सजेस्ट करेंगे वो क्लाइंट को कि हम पेटेंट जब फाइल कर रहे हैं, देन व्हाट यू आर गोइंग टू सजेस्ट
him to avoid all these obstacles, because a notice of trust, irrespective of being express, implied, or constructive, shall not be included in the register. If the notice of trust is related to the death or in that way, then how you can give the consultation to the client to avoid this type of problems? So by showing the proof of death and the power of attorney, we can still ask for the amendment of that particular granted patent to the respective dependents of the patentee. Right? Okay. No, what I am telling, before grant, what we can suggest him? Before grant. Hmm. Before grant, it will ideally go to the legal representative, right? If the person is deceased, the legal representative will still be on the grounds, right? No, no. What I am telling you that in this Corona time, as we know that, matlab, if suppose the person is not ill, okay, till in the type of the crisis period, okay, he is going for a patent application, and he is only one, matlab, only one person is the applicant, okay, and other three are inventors, okay, and in case if the applicant death is happened, so what will going to happen to that application, or how the rights, पेटेंट राइट्स आर, मतलब उसका क्या होगा आगे, पेटेंट का, उस पेटेंट का? You mean applicant has passed away and inventors are there? हाँ, yes. But everything everything is handled by applicant. Inventor has no role once the application is filed, right? So the legal representative of the applicant will be handling each and everything thereafter. So in that that's case, what I was coming from. Like the person or the inventors cannot file this one, right? Either the legal representative of the respective applicant or the inventors will file it. yes. So ideally, if one or the other passes away, it will route to the legal representative, and then if legal representative makes a request that by showing the proof of the deceased person, and it has to be transferred the rights, the exclusive license will be exclusive license will comes after patent. But for now, after discussing with the three of the other inventors, they will decide who will be the assignment. Okay, no, it will happen after the grant now, but I am talking that initially, suppose one person who doesn't have any patent knowledge, or he don't know that the difference between applicant and inventor, and the who is the, matlab, applicant get all the rights now instead of inventor. So if he don't know anything about it, so how you consult him that कि आपको अगर सपोज कि कुछ हो जाता है, देन आपको किसको देना है ये पेटेंट? तो इन दिस केस व्हाट यू कैन सजेस्ट? I mean, the application still you will not get the rights, right? When the patent gets granted, then only the rights will start. Okay, the rights will start after the grant of the patent. Okay. Whatever prosecution part is there, that will be handled by the heir of the applicant, because this will, I think, follow the Succession Act related thing. It is, I guess. Yes. ओके, ठीक है, मैं ये बता देती हूँ आपको. ठीक है, मुझे आंसर ये चाहिए था कि इन केस ऑफ दैट कि एप्लीकेंट ने, इंस्टेड ऑफ ओनली वन एप्लीकेंट, यू हैव टू ऐड मोर एप्लीकेंट्स, 2 or 3. पर जबरदस्ती क्यों डालेंगे? एक ही एप्लीकेंट होगा तो? नहीं, उसका जो मतलब वाइफ हो गए या फिर कोई दूसरे होंगे, इफ यू वांट देन ही कैन ऐड ना इन दिस केस, क्योंकि उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इफ यू वांट टू गो फॉर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डायरेक्टली आफ्टर पब्लिकेशन.
then in that case कि आपको ऐसा suggestion आप दे सकते हो कि instead of only one applicant you have to divide the risk. अगर 2 हो गए तो 50-50 हो जाएगा. ठीक है. The controller shall manage and Means control. when assignee. Applicant means assignee. No. Assignee is different. Applicant is different. Applicant have all the rights. Assignee is the assigned by the applicant. If applicant is not able to do that work, then he will assign to another person. Okay, and the bond or the deed is there. Assignment deed is there. It means the inventor is different, assignee is different, applicant is different. Yes. And rights are also different. Okay. That is your also the मतलब आप वो भी क्वेश्चन नोट डाउन कर लो. The difference between मतलब वो निकालना जरूरी होता है. It is very important question actually because बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि how the rights are transferred. तो इन्वेंटर को उतने राइट्स नहीं होते. Applicant have all the rights. So an assignee is just assigned. Okay. So to do that work. Suppose one pharma company A has kept 3 scientists, and scientists are doing the work. So the scientist will be the inventor. Company will be the applicant. Yes. And who will be the assignee? The pharma company also will be the assignee after. First, pharma company will give some rights to the distributors of the pharmaceutical product, right? They will assign. That will be the something to them. licensee, no? If the license will be given. Like what they will assign some rights. Assignee is different. If suppose that the company assigns that work to do, if he assigns that work to suppose XIII, okay, then the XIII is assignee, okay, and the agreement is signed between both, that is the company and that assignee. Okay, means assignee may be the same or may be different. Yes, there will be some assignment deed between two parties. Okay. Like if there is kind of some merger or acquisition, like that pharma company is acquired by some other company, and there will be some assignment deed or agreement, then the assignee comes into play. Okay. आप ये समझ लो कि असाइनी मतलब अगर सपोज कंपनी ने असाइन किया ये वर्क कि आप ये काम हमें करके दो, तो उनके दोनों में एक डीड हो जाएगा जो कि शेयर बेसिस पे होता है कि वो बोलेंगे हम ये काम करके देंगे, हमें 3% चाहिए शेयर का. Okay, it is a custom synthesis work like pharma companies. Yes. So assignee is different, applicant is different, and the inventors are different. So in this case, the case you told me that तो इन्वेंटर को उन्होंने सब कुछ प्रोवाइड किया होता है, एवरीथिंग. सो सैलरी भी दिया होता है. सो इट इज ओनली अप टू द नेम का ही रहेगा वहां पे इन्वेंटर का मतलब जो काम है वो. अदर ऑल द राइट्स आर ट्रांसफर्ड टू द कंपनी ओनली. Okay. Now understood. Yes. So ma'am, this notice of trust is about that probate only, ना? मतलब कोई पास अवे हो गया तभी. मतलब नोटिस ऑफ ट्रस्ट पास्ट अवे नहीं तो अगर वो मतलब बीमार है तभी भी हो सकता है. Yes. The controller shall manage and control over the register subjected to the superintendence and directions of the central government. ठीक है. So किसके superintendence के अंडर है सब कुछ. So centralized, so central government आ जाएगा. The controller at this discretion can keep the whole of the register or a part in the electronic form, provided it fulfills the safeguards that are provided. When a register is kept in an electronic form, the reference to an entry, rectification, or any particulars in the register would mean a reference made to the record maintenance in the electronic form.
ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्लेस कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस टू एन एंट्री rectification or any particular in the register would mean a reference made to an record maintenance in the electronic form. तो उसका एक रेफरेंस रखना पड़ता है. ओके, तो उस एंट्री का a copy of an extract from the register is admissible evidence in all court proceedings if it is certified to be a true copy under a hand of controller or any officer duly authorized by the controller. तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लो आप. This is entry number 42. हाँ, मतलब अगर सपोज किसी इंसान ने फिजिकली फाइल किया है, सो हार्ड कॉपी सबमिटेड. ओके, तो उसका वो क्या करते हैं, स्कैन कॉपी जो है एज अ रिकॉर्ड में रख देते हैं. ठीक है, एंड मतलब और ये जो हमने पहले पढ़ा था कि अंडर एविडेंस एक्ट जो आपने क्वेश्चन सबसे पहले पूछा था ना, दैट वन, अ कॉपी, ट्रू कॉपी होनी चाहिए, तभी हम उसको एज अ एविडेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं. एंड इट इज ड्यूली ऑथराइज्ड बाय कंट्रोलर. ठीक है, ये पता, ये समझ में आ गया क्या आपको सबको? Can you just explain once more? हाँ, ओके, कौन सा पॉइंट? दिस वन. Yes. व्हेन अ रजिस्टर इज केप्ट इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमने डाटा स्टोर करके रखा है रजिस्टर में का. द रेफरेंस टू एन एंट्री, रेक्टिफिकेशन और एनी पर्टिकुलर्स इन द रजिस्टर वुड मीन अ रेफरेंस. हाँ ठीक है, ये रेफरेंस टू एंट्री, रेक्टिफिकेशन और पर्टिकुलर मतलब क्या होता है? इट इज अ रेफरेंस मेड टू द रिकॉर्ड मेंटेनेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. रिकॉर्ड मेंटेन इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. ठीक है, मतलब पूरा रिकॉर्ड ही होता है वो. इट इज नॉट ओनली रेफरेंस, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट ही होते हैं वो. ठीक है, स्कैन कॉपी होती है. हाँ, या फिर जो पीडीएफ हमने ऑलरेडी सबमिट किया वो चीज होती है. Then after this second part is a copy of an extract from the register is admissible evidence in all court proceedings. अगर हमने ई रजिस्टर रजिस्टर से हमने कोई कॉपी निकाला है, then it is like कि evidence होगा, प्रूफ होगा under any court proceedings. अगर इन्फ्रिंजमेंट का कोई केस है, ठीक है, पोस्ट ग्रेंट अपोजिशन है, देन उसमें इट इज लाइक प्रूफ की तरह, मतलब प्रूफ की तरह हम यूज कर सकते हैं उसको. और उसके ऊपर नेसेसरी क्या होगा कि कंट्रोलर का साइन एंड स्टैंप लगेगा, बिकॉज इट शुड बी अ ट्रू कॉपी. दैट्स व्हाई. ओके, सो ऑथराइजेशन लगेगा. Okay. The Patent Rule 2003 with respect to Register of Patents. Chapter 12 deals with the Register of Patent. The controller shall enter the following details in the register at each appropriate office upon the granting of patent. Then what is included? Name, address and nationality of the grantee as the patentee. So अभी मुझे बताओ ग्रांटी और पेटेंटी में क्या फर्क है? जो हमने ई रजिस्टर में देखा था, यहाँ पे ग्रांटी और पेटेंटी का नाम सेम ही था. तो ग्रांटी और पेटेंटी,
ठीक है, पहले तो उसको पेटेंट ग्रांट हुआ है, सो इट इज ही इज ग्रांटी हुआ वो, एंड उसके बाद पेटेंट मिल गया तो उसको हमने उसका नाम चेंज कर दिया, पेटेंट ही हो गया। After तो issuing the patent, it will be the patentee. हाँ, यस यस यस। Okay. तो जब आप आईपी इंडिया वेबसाइट पे ई पास पे जाओगे ना, ठीक है, अभी इन पास पे जाओगे, अगर आपने सेम एप्लीकेशन नंबर ग्रांटेड का यहाँ पे डाल दिया, सपोज पेटेंट नंबर डाल दिया, क्या था वो पेटेंट नंबर? नोट डाउन किया क्या आपने? नहीं। ओके, ठीक है। ठीक है, ग्रांट होने से पहले ये होता है, क्या था? इंटीमेशन ऑफ ग्रांट। देखो क्या लिखा है, पेटेंट आवेदन संख्या, दिस इज द एप्लीकेशन नंबर, ओके। The intimation of grant and recordal of patent under section 43 of the act in respect of the patent application number, this one. Okay. The same patent, ठीक है। No hard copy of a patent certificate shall be issued separately by the office, ठीक है। तो इस पे ही जाके डाउनलोड करना पड़ता है। पेटेंट एप्लीकेशन तो देखा ही होगा आपने? नहीं देखा मैम। नहीं देखा है? नहीं। ओके, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे जब आप दिख रहा है ना आपको स्क्रीन? Yes, it is visible, ma'am. ओके, जब हम व्यू डॉक्यूमेंट में जाते हैं, देन हियर द पेटेंट सर्टिफिकेट इज देयर, सो इट इज इन दिस वे। यहाँ पे क्यूआर कोड है। Okay. सो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है देखो, पेटेंट नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ फाइलिंग, देन पेटेंटी, ठीक है।
So Yes. after ये अगर certificate issue हो गया तो the grantee become patentee. Okay. Okay. ठीक है. The name, address and nationality of the grantee as the patentee. Title of the invention. Date of, मतलब ये चीज का आपको पता चला ना इम्पोर्टेंस क्या है Yes. आगे लिखने का. Yes. हाँ. The title of the invention, date of the patent, date of grant. टाइटल तो होना ही चाहिए. डेट ऑफ पेटेंट, मतलब पेटेंट जो मिला है किस दिन मिला है, ग्रेट हुआ है. डेट ऑफ ग्रेट, अभी यहाँ पे डेट ऑफ ग्रेट और डेट ऑफ पेटेंट सेम ही है. ठीक है. It may be different. नहीं, जनरली सेम ही होगा. वो जो फीस होता है ना, हाँ. हाँ, वो कुछ पे करना पड़ता है शायद उसके लिए. ठीक, देखते हैं उन्होंने कैसे किया है. You are not feeling well, ma'am. हाँ, यस, एक्चुअली मेरा थोड़ा सा ठीक नहीं था तबीयत, इसीलिए मेरा पोस्टपोन हो गया था क्लास. Yes, ma'am. एंड इवन मुझे प्रिपरेशन का भी टाइम नहीं मिला है. Yeah. No issue, ma'am. We are learning. हाँ. yes. आपके पास शेड्यूल्स है ना? Yes, I have schedule, ma'am. Their act I have. ठीक है, एक बार शेड्यूल में देख लेना. Okay. हाँ, यहाँ पे डेट ऑफ पेटेंट है, मार्च है, मार्च 2016. एंड डेट ऑफ ग्रांट इज February 2021. Okay. But prior art will be considered from the 2016. हाँ, yes, because the date of filing, from date of filing उसका चेंज हो जाएगा. डेट ऑफ फाइलिंग को बोलेंगे डेट ऑफ पेटेंट, बिकॉज इट इज एज अ रेफरेंस ना. जैसे हम Okay. जीरो Now, को ले. हाँ, date of filing now will convert into the date of patent. हाँ, यस, मतलब जिस दिन हमने डिस्क्लोज कर दिया हमारा पेटेंट. Right. हाँ, तो जो प्रायोरिटी जो होती है वो पता होगा आपको. हाँ. Yes. हाँ, so what is the difference between filing and priority? Can you tell me?
प्रायोरिटी हाँ, अगर आपको पता है तो बताओ. डेट ऑफ फाइलिंग इज द डेट ऑफ प्रायोरिटी. हाँ, नहीं ऐसा नहीं होता है. ऐसा नहीं होता है. अच्छा. नहीं, हाँ, कोई और बता सकता है क्या? इन केस एक प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल हुआ हो, very first filing date will be the date of priority. ओके. और कोई बता सकते हैं? ठीक है, हम इस केस को ही लेते हैं. ये नोट डाउन कर लो. डेट ऑफ पेटेंट 04/03/2016 and date of grant 26/02/2021 and date of recordal 26/02/2021. ये आप नोट डाउन कर लो. Ma'am, this date of recordal will may be the same or may be different, or say every time it is the same date of grant or date of recordal. डेट ऑफ ग्रांट जो होगा तो इमिडिएटली मतलब अभी तो ये है, ऑनलाइन ही है ना सब कुछ. एवरीथिंग इज ऑनलाइन. सो जनरली दे आर सेम ही होगा वो. Okay. Normal due date with extension, this one. Normal due date 26/05/2021, 26/11/2021. Date of renewal Date of 3 2030. महीने तो हो गए उसमें. 3 months का लैप्स है. तो ये मेंटेन किया उन्होंने फीस भर के. ठीक है. तो ये 3 डेट्स आपने लिख के लिया है क्या? तो हम इसमें डिफरेंस पता चलेगा हमको फिर बाद में. ये नोट डाउन कर लो. Okay. फॉर्म 1 देखते हैं. अब मुझे बताओ फॉर्म 1 से क्या क्या पता चलता है आपको? एप्लीकेशन कौन से टाइप का है? ऑर्डिनरी एप्लीकेशन. डिविजनल तो नहीं है. पेटेंट ऑफ एडिशन नहीं है. देन इन्वेंटर का नाम आ गया, नेशनलिटी, कंट्री ऑफ रेसिडेंस, एड्रेस. Then category of applicant, that is natural person. And the inventory same as applicant. ये गलती से हुआ है शायद, because the inventory same as applicant आना चाहिए. ठीक है. तो अटॉर्नी के एड्रेसेस और इन्वेंटर के एड्रेसेस है, उनके फोन नंबर्स, ईमेल आईडी है. एंड आफ्टर दैट उनका सिग्नेचर है. Right. जो एप्लीकेंट है उनका सिग्नेचर है.
That's it. मैम पेटेंट फाइल करने में पेटेंट एजेंट कितनी फीस लेते हैं, जैसे सपोज इसका हुआ? It's depend upon that agent actually, because उनके प्रोफेशनल फीस है वो. ओके. तो इट वेरीज एक्चुअली. तो उसमें भी स्टेप बाय स्टेप होता है हर एक चीज, बिकॉज इफ पर्सन वांट पेटेंटेबिलिटी रिपोर्ट, द फीस इज डिफरेंट. If you Okay. want filing, then the fees is different. If you want a drafting, provisional or complete, the fees is different for both. Okay. Yes, and the FER response, the fees is different. The hearing charges are different. So the stepwise fees will changes, and it also varies from the experience. If the person is very experienced, then he will charge you more. Okay. And it may be negotiable. हाँ, negotiate होता है ना. Okay. मैम ये तो अभी आउट ऑफ कंटेक्स्ट ही है. इन केस अगर कोई एजेंट कह रहा है किसी इन्वेंटर ने और उसको नहीं पसंद आ रहा उसका काम, तो फिर कोई रिमूवल का प्रोसेस होता है क्या? He can transfer to the another. Yes, it is there. ओके. और ट्रांसफर करो या फिर खुद ही ऑपरेट कर सकते हैं? मतलब इन्वेंटर खुद से करना चाहता है ऑपरेट, मतलब. हाँ, वैसा प्रोविजन होता है क्या? हाँ, कर सकता है ना, क्यों नहीं कर सकता है वो. Yeah. बट मैं सजेस्ट करूंगी कि मतलब खुद से ना जाके किसी का हेल्प लेना अच्छा रहता. हाँ. हाँ, खुद से कर सकता है. अगर सपोज ही इज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड एंड ही इज हैविंग अ वेल नॉलेज ऑफ पेटेंट एक्ट ना, देन खुद से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर मैम पेटेंट एजेंट चेंज करना है तो कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? उनको ये मतलब लिख के देना पड़ेगा उस तरीके से. पावर ऑफ अटॉर्नी चेंज करना पड़ेगा ना? हाँ, पावर ऑफ अटॉर्नी चेंज करना पड़ेगा फॉर्म पे, लेकिन वो पहले बताना पड़ेगा कंट्रोलर को कि वी वांट टू चेंज दिस वन. ओके, बाय सेपरेट एप्लीकेशन. तो हाँ, वापस फॉर्म 1 वगैरह सब करना पड़ता है क्या? क्योंकि नहीं, नो नो नो, नहीं. सर्विस एड्रेस चेंज हो जाता है होगा ना? हाँ, वो फॉर्म जो इट इज जो रिलेवेंट फॉर्म्स है वो तो भरने पड़ेंगे ना. हाँ. लेकिन जनरली व्हाट हैपेंस ना, अगर पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है, then there are minimum 4-5 attorneys are mentioned there. So क्या प्रॉब्लम होगा अगर चेंज करना है तो, मतलब. नहीं, मैं पूछ रही हूँ सिंपल. अभी देखो ना, यहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी है, कितने सारे एजेंट है वो देखो. तरुण खुराना, देन तो मीनाक्षी. मैम वो कैसा है कि कोई भी फिर हियरिंग को जा सकता होगा ना इनके जैसे? हाँ, यस 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 यस. ऑटो जैसे इनका एडवोकेट्स का जैसे रहता है कि बहुत एक पीओए में बहुत सारे नाम रहते हैं और फिर वो कोई भी जाके हियरिंग अटेंड करके आता है, हाँ, तो यस यस. वैसा भी होगा? चलो, ग्रांट हो गया. हम क्या देख रहे थे, हम डेट्स का देख रहे थे ना. मैम आई थिंक आधे लोग निकल गए हैं अभी. चल गए मतलब 5 ही दिख रहे हैं मुझको पार्टिसिपेंट्स. 5 में तो 2 तो इन हाउस ही हैं, मैं और. अच्छा, ओके ओके, मतलब बाकी के लोगों को पसंद नहीं आ रहे शायद. ठीक है. नहीं मैम, पसंद आ रहा अच्छा, होगा पर बहुत अच्छा. टाइमिंग की वजह से मेरे ख्याल से. हाँ हाँ, ओके ओके. 6:30 तक ही था ना? हाँ हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, मैं तो मुझे तो अच्छा लग रहा है. इनफैक्ट चीजें सीखने को मिल रही. नहीं, मुझे भी प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है. हाँ हाँ, ओके. कभी देखा नहीं था ये ऐसे फॉर्म वगैरह कैसे क्या ऑपरेट हो रहा है. ओके, ठीक है. हम जो डेट्स देख रहे थे, दैट इज अ Yes, ma'am. फाइलिंग डेट, देन प्रायोरिटी डेट, तो अगर प्रोविजनल फाइल करते हैं तो वो जो डेट रहेगा वेरी फर्स्ट फाइलिंग का, वो प्रायोरिटी डेट है ना? फाइलिंग डेट इज कैन बी मेनी. हाँ, फाइलिंग डेट्स कैन बी मेनी, बट प्रायोरिटी इज इम्पोर्टेंट. जहाँ प्रायोरिटी पे इज आप इम्पोर्टेंट.
हाँ, जहाँ पे आप बता रहे हो कि आपको इन्वेंशन क्या है एग्जैक्टली डिस्क्लोजर जहाँ पे दे रहे हो हाँ, that is that- effective filing date. It is called as effective filing date when you हाँ, file the complete specification. Okay, then that is called as a priority date. So मतलब अगर हम फर्स्ट फाइलिंग में अब्स्ट्रैक्ट में ही सब कुछ बता रहे, सपोज यहाँ पे देख लो आप. So this term is very important. The term filing and priority date are often used interchangeably, but they are not the same. The filing date is the date when a patent application is first filed at a patent office. The priority date, sometimes called the effective filing date, is the date used to establish the validity and or obviousness of a particular invention relative to other art. The priority date may be either than the actual filing date of an application. If an application claims priority to an earlier parent application, then it is priority date may be the same as the patent. Parent. Okay. अगर पेटेंट ऑफ डिविजनल एडिशन, के जैसा है ना. हाँ पेटेंट ऑफ एडिशन है तो उसमें ठीक है, या फिर यूनिटी ऑफ इन्वेंशन का कुछ आता है, देन इन दैट केस. So important, what is important? Filing date is not important. If effective filing date is important and it is called as a priority date. Okay. और प्रायोरिटी डेट से ही काउंट होता है. देखो पेटेंट कहाँ से काउंट होता है, पेटेंट का डेट जो 20 इयर्स का टर्म है वो कहाँ तक, मतलब कहाँ से काउंट होता है वो देख लो एक बार. आपने पढ़ा है ना शायद ये. पढ़ा तो है मैम, पर ये 3 वर्ड एक साथ नहीं पढ़े. मतलब ये आपको आई थिंक पहले हो गया होगा ना. हाँ, फाइलिंग डेट ये सब तो पढ़ा है. टर्मिनोलॉजी वी नो द टर्मिनोलॉजी, बट वर्सेस फर्स्ट टाइम वी आर लर्निंग. हाँ नहीं, जब तक आप ऐसे नहीं पढ़ोगे तो समझ में मैम नहीं आएगा. आप सच में सही तरीका बता रहे हो पढ़ना कैसे चाहिए. एक एक टर्म को एक्चुअली बहुत डिफरेंट स्टाइल से, फिर डिफरेंट वेज से पढ़ना चाहिए. कंपैरेटिव स्टडी. हाँ यस, ठीक है, आप ये पढ़ो और मुझे बताओ अभी प्रायोरिटी डेट और पेटेंट कब से, मतलब ग्रांट मिल गया तो कहाँ से काउंट होगा, कौन से डेट से, फाइलिंग डेट से होगा या फिर प्रायोरिटी डेट से? प्रायोरिटी डेट से काउंट होगा मैम. ओके, प्रायोरिटी डेट से 20 इयर्स. हाँ ठीक है. और जब तक रिन्यूअल फीस हुई है. If a patent application is an original non-provisional patent application, not a continuation application, and not previously filed in another country, its filing date is usually the same as its priority date. हाँ, तो मतलब कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कर लो, उसमें ना डिविजनल हो रहा है ना पेटेंट ऑफ एडिशन है या फिर ऐसा कुछ नहीं है, और दूसरी कंट्री में भी कहीं फाइल नहीं किया है, तो फिर वो वही फाइलिंग डेट होती है और वही प्रायोरिटी डेट भी होती है. ठीक है. ये आपको, मतलब आप इसके ऊपर थोड़ा सा बना लो कुछ नोट्स, और मैं बाद में भी पूछूंगी आपसे. ठीक है. ओके मैम. ओके मैम. The date of patent, date of grant, date of patent, date of grant, address for service of the patentee. The controller shall also हमें ये भी देखना रह गया ना, डेट ऑफ पेटेंट एंड डेट ऑफ ग्रांट. यस. ठीक है. डेट ऑफ पेटेंट तो प्रायोरिटी डेट ही है ना. हाँ. डेट ऑफ ग्रांट, date of grant is the date on which patent is granted and रजिस्टर में जब जाता है. अभी आप क्या करो, अभी 2-3 ऐसे ही रैंडम एप्लीकेशन डालो 6 डिजिट ई रजिस्टर में जाके, और उसका चेक करो डेट ऑफ ग्रांट और डेट ऑफ पेटेंट, नहीं डेट ऑफ ग्रांट एंड रिकॉर्डल का डेट, वो चेक करो. ठीक है, और मुझे बाद में बताना सेम है डिफरेंट है. बट मीन्स डेट ऑफ रिकॉर्डल का कोई मीनिंग नहीं रह गया जब हम डेट ऑफ फाइलिंग ही डेट ऑफ ग्रांट पेटेंट हो गई ना. डेट ऑफ रिकॉर्डल तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन पर्पस हो गया.
Means if I am considering in view of the patentee, so filing date is more important. Means date of the patent is more important because he will count from that to 20 years. Okay, so you are telling me that the priority date is important. Right. In my view. Okay. You tell me what will be the importance. Yes, priority date is really important because the patent is counted from that only. Yes. But why they are writing the date of record every time? No, the date of recordal उनका वो criteria होता है कि वो सब कुछ मतलब वो लिखेंगे. Because documentation is important. Yes. Okay. The controller shall also enter the particulars regarding the process. I think जैसे अभी ग्रांट दे दिया जिस दिन कि आपका ग्रांट का आपको नोटिफिकेशन आ गया, वो रजिस्टर में जाने को थोड़ा टाइम रहता होगा, उसको वो डेट ऑफ रिकॉर्डल ऐसा बोलते हैं क्या? पर अभी तो ई रिकॉर्डिंग चल रही है तो सेम ही होना चाहिए. शायद कुछ प्रोसेसेस रहती होगी, मतलब कुछ अपलोड होगा या फिर पता नहीं क्या अपलोड होगा, ग्रांट हो गया तो हो गया ना, इट इज जस्ट अ रिकॉर्डल. तो या फिर हो सकता है पहले के पेटेंट्स में लैग होगा, उसके वजह से उन्होंने रखा हो, जो फिजिकल फाइलिंग से पहले होता था, देयर मस्ट बी लैग ग्रांट में, और फिर सारा रिकॉर्ड पे मतलब सब स्कैन करके रिकॉर्ड में डालने के इसमें गैप रहता होगा. दैट इज व्हाई उन्होंने 2 बनाया है जो अभी अप्लाई नहीं हो पा रहा ई फाइलिंग की वजह से. ओके. दैट माइट बी द केस. ठीक है, वो आप ही बताओ मुझे बाद में, चेक करो पहले. थोड़ा सा कैसे है ना कि डायरेक्टली अगर बता दिया ना तो फिर आपको ध्यान से निकल जाएगा वो चीज. ठीक है, होमवर्क कर देते हैं. होमवर्क मतलब मैंने बोला है कि ई रजिस्टर पे जाके 6 डिजिट्स के अलग अलग पेटेंट एप्लीकेशन डाल के देखो, उसका डॉक्यूमेंट्स देख लो, एंड देन आफ्टर उसका पेटेंट सर्टिफिकेट देखो और उसके ऊपर से मुझे बता देना. ठीक है. ठीक है. The controller shall also enter the particulars regarding the proceedings that takes place under this act before the controller or the appellate board. Where the register of a patents or any part thereof is in computer floppies, dictates, or any other electronic form, it shall be maintained and assessed only by the person who is duly authorized by the controller, and no entry or alteration or any entry or rectification or any entry in the said register shall be made by any person who is not so authorized by the controller. Means what, ma'am? ये आपको समझ में आया क्या? नहीं. मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ. मैम उसको 100% से थोड़ा और बड़ा कर लो आप, तो अच्छा पूरे में फैल जाएगा स्क्रीन पे. ठीक है, अभी दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा है. Okay. The controller shall also enter the particulars regarding the proceedings that takes place under this act before the controller or the appellate board. अगर कोई proceeding चल रही है उसके against. Okay. तो वो भी वहाँ पे उसके जो particulars है, जो भी चीजें हैं वो उस पे रहेगा documents. Okay. Where the register of patents or any part thereof is in computer floppies, dictates, or any other electronic form, it shall be maintained and assessed only by the person who is duly authorized by the controller, and no entry or alteration of any entry or rectification of any entry in the said register shall be made by any person who is not so authorized by the controller. So authorized person ही assess कर सकता है और changes कर सकता है. Okay, now clear. The power of registered grantee or proprietor to deal with patent. The registration of assignments, transmission, etc. is dealt under Section 69 of the Patents Act 1970.
the person or persons registered as a grantee or proprietor, ठीक है, मतलब ग्रांट मिल चुका है, ग्रांटी हो चुका है, or proprietor of a patent shall have the powers to assign, grant license under, or otherwise deal with the patent, and to give effectual receipts for any consideration for any such assignments, license or dealing. ठीक है, अगर सपोज अभी श्यामलाल ने क्या किया, उनका लाइसेंस कर दिया, किसी को असाइन कर दिया, और उसके थ्रू उन्होंने मतलब लाइसेंसिंग करवा दी पेटेंट की, तो उसके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी इसमें होंगे, ठीक है। तो पर्सन और पर्सन रजिस्टर्ड एज अ ग्रांटी, अगर एक भी हो सकता है या फिर मेनी भी हो सकते हैं। तो ग्रांटी कौन होगा, जो एप्लीकेंट है वही होता है, तो एप्लीकेंट एक भी होता है और मेनी भी हो सकते हैं, ठीक है। या तो ग्रांटी होगा या फिर और प्रोप्राइटर ऑफ अ पेटेंट शैल हैव द पावर टू असाइन, तो उनके पास क्या पावर होते हैं कि वो असाइन कर सकते हैं, ग्रांट लाइसेंस अंडर or otherwise deal with the patent, and to give effectual receipts for any consideration for any such assignment, license or dealing. तो ये सारे जो rights है, it is only subjected to that grantee. Okay. Okay. Assignments etc. not to be valid unless it writing and duly executed. So सब कुछ writing में होना चाहिए and duly executed होना चाहिए. मैम एग्जीक्यूटेड मतलब नोटराइज्ड वगैरह करना पड़ेगा क्या? हाँ हाँ, यस यस। ओरिजिनल देना पड़ता है या कॉपीज देनी पड़ती होगी ना? हाँ, उसको ट्रू कॉपी मतलब उसका जो ओरिजिनल ही होता है वो स्कैन करके डालना पड़ेगा उसको। An assignment of a patent or of a share in a patent, a mortgage, license, or the creation of any other interest in a patent shall not be valid unless the same was in writing and the agreement between the parties concerned is reduced to the form of a document embodying all the terms and conditions governing their rights and obligations and duly executed. ठीक है। मैम गीताली मैम, अभी आपको शायद पता चला होगा ना असाइनमेंट वाला? क्लियर हो गया होगा। क्या हुआ, आपने पहले डिस्कस किया था? नहीं नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ना असाइनी वो उनके बीच में। हाँ, असाइनी, पेटेंटी एंड लाइसेंसी। तो अभी सब लोग असाइनी, इन्वेंटर्स एंड क्या है यार, एप्लीकेंट, उनके बीच में थोड़ा एप्लीकेंट। ठीक है। अभी आपको सोच रहे होंगे पहले कि मैडम नीचे से क्यों स्टार्ट कर रही है, तो हम तो ये मैंने स्टार्ट किया था ना नीचे से, नीचे के पेज से ऊपर ऐसे। हाँ नहीं, बट सही है ना ये कि हाँ हाँ, क्योंकि अगर मैंने पहली सेक्शन 67 पढ़ा दिया होता ना तो आपको डर लग जाता है उसका। वो फिर क्या होता है कि डिफिकल्ट लगती है चीज फिर। ठीक है, अभी ये पॉइंट समझ में आया आपको? एन असाइनमेंट ऑफ अ पेटेंट ऑफ, अभी असाइनमेंट क्या किस तरीके से है? शेयर इन अ पेटेंट होगा, मॉर्गेज होगा, लाइसेंस होगा, और क्रिएशन ऑफ एनी अदर इंटरेस्ट in a patent shall not be valid unless the same was in writing and the agreement between the parties concerned is reduced to the form of a document embodying all the terms and conditions. तो उसमें terms और conditions भी होते हैं, okay? Governing their rights and obligations, मतलब कितना शेयर अमाउंट कितना होगा, अंडर मतलब अलग अलग कंडीशंस होते हैं उसमें। तो अगर वो लोग कंडीशन पे आते हैं तो मतलब उसमें अमाउंट रहता है, मतलब बहुत सारी चीजें रहती है, कितने साल के लिए है, ठीक है, कितना परसेंटेज है, ये कितना अमाउंट है, वो सारी चीजें उसमें लिखी हुई होती है। एंड देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूली एग्जीक्यूटेड।
it shall not be valid unless it was in writing. Okay, writing में होना चाहिए तभी it is valid. समझ में आ गया क्या आपको? Yes, ma'am. Registration of assignments, transmission, etc. Section 69 deals with the registration of title and interest. A person in writing can apply to the controller to register the title that he gained in a particular patent as a result of the assignment, transmission, or operation of law to a patent or to a share in a patent, or became entitled as a mortgage license. Such an application should be made in the prescribed manner. When his application is supported with a valid proof, the controller makes the necessary changes with respect to his title or interest in the register. If the person makes an application is entitled to a patent in whole or a share in the patent, he shall be registered in the register as a proprietor or co-proprietor. ठीक है, अगर सपोज मेरे कोई XYZ पर्सन ने लाइसेंस किया है टू ABC को, दैट मच ऑफ शेयर्स उन्होंने दिए पेटेंट में कुछ काम के लिए, ठीक है, कुछ चेंजेस किए और उसमें शेयर्स दिए हैं, तो उसको हम प्रोप्राइटर या फिर को प्रोप्राइटर बोलेंगे, along with the instrument which has given him the title. ठीक है, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट होगा वो उसमें हमें मतलब कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा. When the person makes the application is entitled to any interest in the patent, the controller records his notice of interest in the register along with the instrument bestowed him with such an interest. Excuse me. Sorry for inconvenience. Section 69 deals with the registration of title and interest. ठीक है, तो टाइटल कब मिलेगा बता दो मुझे, अभी पढ़ा है हमने. Title after granting the patent title. हाँ, title and interest. Okay. Right. तो यहाँ पे देखो, if the person makes an application is entitled to a patent in a whole or a share in a patent. ठीक है, ये वाला नोट डाउन कर लो ये चीज. If the person makes an application is entitled to a patent in a whole or a share in a patent, he shall be registered in the register as a proprietor or co-proprietor along with the instrument which has given him the title. तो टाइटल कौन सा मिलेगा, प्रोप्राइटर या को-प्रोप्राइटर का मिलेगा. मैम ये असाइनमेंट डीड वगैरह नहीं आएगा ना ड्राफ्ट वगैरह करने में? नहीं, उनका एग्रीमेंट होता है ना. अभी वो उन्होंने किसके ऊपर बनाया उसके ऊपर डिपेंड है. डीड के ऊपर डीड भी बना सकते हैं. हाँ, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा ना ड्राफ्ट करो? नहीं वो नहीं आएगा क्वेश्चन. ये असाइनमेंट डीड्स वगैरह ये सब पेपर 2 में नहीं, पेपर 2 में क्या आता है कि पेटेंट एक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कुछ, एंड ड्राफ्टिंग जो होती है जो आप बोल रहे हो, सो इट इज रिलेटेड टू पेटेंट ओनली. मतलब पेटेंट एप्लीकेशन एज पर इंडियन लॉज कैसे ड्राफ्ट होना चाहिए वो आता है. मैम ये जो असाइनमेंट ट्रांसमिशन वगैरह जो मॉर्टगेज वगैरह की डील्स है, फिर ये एजेंट्स पेटेंट एजेंट्स ही बनाते हैं या फिर लॉयर लोग करते हैं? नहीं, वो डील जो लोगों में हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड है. इट इज मेड बाय लॉयर. एक्चुअली जो बॉन्ड पेपर है ना, वो 500 रुपीज के बॉन्ड पेपर के ऊपर प्रिंट आउट करके लो जो भी आपको बनाना है, मतलब म्यूचुअल कंसेंट से. हाँ,
अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का है तो उनके ऑफिस से आएगा एप्लीकेशन और उसके ऊपर फिल होगा वो सब कुछ, फिर उनका ऑथराइजेशन होगा उसके ऊपर। और ये जो अपन पावर ऑफ अटॉर्नी का ये करते हैं वो कौन से वाले स्टैम्प पेपर पे लगा है? 100 वाला? 100 वाला दिल्ली ऑफिस का है एंड बॉम्बे ऑफिस इट इज 500। ओके, स्टेट टू स्टेट मतलब डिपेंड करेगा। हाँ हाँ, मतलब वो देखना पड़ेगा कि कौन से ऑफिस का कौन सा है। ये दिल्ली का 100 है एंड बॉम्बे ऑफिस का तो मैं आई एम डूइंग वर्क फ्रॉम बॉम्बे ना, सो आई नो दैट। मतलब महाराष्ट्र स्टैम्प एक्ट के अंडर वगैरह जाएगा शायद। हाँ हाँ, ये मतलब कहाँ से बॉम्बे देखना ऑफिस पड़ेगा में मैम? स्टैम्प रूल्स भी कहीं देख सकते हैं क्या? नहीं नहीं, वो जरूरत नहीं है। वो अभी आप पढ़ लो, पेटेंट एक्ट अच्छे से पढ़ लो, उतना मतलब नहीं जरूरत है। ये मॉर्गेजेस का वगैरह वो इतना जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है। हाँ, Section 69 deals with the registration of title and interest. A person in writing can apply to the controller. ठीक है, कंट्रोलर को अप्लाई करना पड़ता है टू रजिस्टर द टाइटल दैट ही गेट इन अ पर्टिकुलर पेटेंट एज अ रिजल्ट ऑफ असाइनमेंट। मतलब जिनको टाइटल मिला है वो करेगा असाइनमेंट, ट्रांसमिशन और ऑपरेशन ऑफ अ लॉ to a patent or to share in a patent or become entitled as a mortgagee licensee. Such an application should be made in the prescribed manner. When his application is supported with मैम valid proof. Yes. मैम ये मॉर्गेज इज डिफरेंट एंड लाइसेंस इज हाँ, डिफरेंट? इट इज डिफरेंट। यस यस, अगर इनको लोन भी लेते हैं ना आईपी के ऊपर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर। ओह रियली? हाँ यस, सो दैट्स व्हाई। ओके, बट हु विल गिव द लोन? नहीं, जिनका शेयर है उनको मिलेगा ना लोन। अच्छा, हाँ अभी जैसे कोई नेशनलाइज बैंक है, उसकी तरफ से किसी स्टूडेंट को लोन मिला है, मतलब अप्लीकेंट को अपना एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करने के लिए, और वो नहीं दे पाया, फिर वापस नहीं कर पाया लोन का अमाउंट, तो फिर वो मॉर्टगेज हो जाएगा उसका जो भी इन्वेंशन रहेगा, है ना? वो वैसा। ओके, बट इफ इट इज द नहीं, वो पहले पोटेंशियल दिखाना देन पड़ता है। मतलब लोन में जैसे हम घर या फिर लैंड दिखाते हैं ना, हाँ हाँ, तो इट इज लाइक दैट कि हम आईपी दिखा सकते हैं, मतलब हमारा पेटेंट दिखा सकते हैं पर एज वो अ मॉर्गेज। पोटेंशियल पेटेंट है तभी तो बैंक देगी ना। हाँ नॉन यस पोटेंशियल? यस नहीं, यस बट यस। जरूरी नहीं है ना मैम की, नहीं मतलब ये एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ। इन केस नहीं हो पाया, प्रोडक्ट बना दिया लेकिन वो कोई ले ही नहीं रहा, पैसे ही नहीं बन रहे उसमें से, तो हो सकता है बैंकरप्ट हो जाए बनाने वाला। हाँ नहीं वही नॉन पोटेंशियल हाँ हाँ, पेटेंट। नहीं कैसा है, बैंक भी वेरीफाई करता है। सो अगर कोई सपोज वन यूटिलिटी पेटेंट इज देयर और कुछ भी फाइल कर दिया उसको, अगर उसको ग्रांट नहीं मिलने वाला, मतलब आफ्टर ग्रांट इट विल हैपन ना, सो इट इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट एक्चुअली, सो दैट्स व्हाई दे आर गिविंग, मतलब इट इज लाइक अ मॉर्गेज, बिकॉज पेटेंट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ऐसे ही नहीं मिलता है ना, इट इज लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस, दैट्स व्हाई। इट इज लाइक ए मूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ यस यस। ओके, Such an application should be made in the prescribed manner. When his application is supported with valid proof, the controller makes the necessary changes with respect to his title or interest in the register. As the person makes an application is entitled to व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट इन द रजिस्टर मींस? अगर उनका पेटेंट में कुछ इंटरेस्ट है, मतलब एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज मॉर्टगेज, लाइसेंस। ओके, हाँ। If the person making an application is entitled to a patent in whole or a share in a patent, he shall be registered in the register as a proprietor or co-proprietor along with the instrument which has given him the title. When the person making the application is entitled to an interest in the patent, the controller records his notice of interest. Okay? Controller records his notice of interest in the register along with the instrument bestowing him with such an interest.
when there is a dispute between the parties with respect to the vesting of title, the vested interest, vesting of title or interest in the person making an application, the controller will not register the title or notice of interest in the register until the dispute is resolved by a competent court. ठीक है, अगर dispute होगा तो वो process आगे proceed नहीं होता है. When an agreement, licenses and other documents affect the title to any patent, copies of such agreements, licenses and other documents shall be provided to the controller for filing purpose in the register. ठीक है, ये 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है. अगर ये फर्स्ट वाला जो है अगर डिस्प्यूट है, then after resolution of that dispute, then and then only it will go into file. When an agreement, license and other documents affect the title of any patent, copies of such agreement, license and other documents shall be provided to the controller for filing purpose in the register. Okay. In the case of license granted under a patent, the controller shall, if so requested by the patentee or licensee, take steps for securing that terms of the license are not disclosed to any person except under the order of the court. In the case of a license granted under the patent, the controller shall, if so requested by the patentee or licensee, take steps for securing that terms of license are not disclosed to any person except under the order of court. ठीक है, अगर कोर्ट का ऑर्डर है, then and then only what will happen? जो टर्म्स ऑफ लाइसेंस है वो डिस्क्लोज नहीं होता है. अगर कोर्ट ने कहा देन एंड देन ओनली इट विल डिस्क्लोज. अगर कोर्ट ऐसे नहीं बोलेगा, अगर कोई रीजन है बहुत बड़ा, देन एंड देन ओनली कोर्ट विल आस्क टू डिस्क्लोज. ओके, otherwise it will not going to disclose. And what will not going to disclose? The terms of license are not going to disclose. अभी मैंने बताया था टर्म्स एंड एग्रीमेंट कंडीशंस होते हैं उनके, जिसके ऊपर एग्रीमेंट बनता है लाइसेंसिंग का, एंड इट इज वेरी टॉप सीक्रेट. तो डिस्क्लोज कब होगा? जब कोर्ट ही ऑर्डर करेगा तभी डिस्क्लोज होगा वो चीज, अदरवाइज इट विल नॉट. समझ में आ रहा है आपको? मैम ये वाला नहीं समझ में आया. ओके, in the case of license agreed granted under a patent, suppose XYZ को पेटेंट मिला है. ओके, और उन्होंने लाइसेंस कर दिया उसका पेटेंट का किसी एबीसी को. ठीक है, तो अंडर कुछ टर्म्स और कंडीशंस के अंडर उन्होंने लाइसेंस किया है. हाँ, तो वो टर्म्स और कंडीशन किधर भी डिस्क्लोज नहीं हो सकते अनलेस एंड अनटिल अगर कोर्ट ने बताया कि डिस्क्लोज करो वो चीज, देन एंड देन ओनली इट विल गो टू डिस्क्लोज. अदरवाइज दैट डॉक्यूमेंट इज वेरी सीक्रेट डॉक्यूमेंट. Okay, that will not come into the public domain, right? हाँ, it will not come. Okay, fine. Now understood. A document whose entry has not been made in the register cannot be considered person evidence of a title of any person to a patent or a share or interest. ठीक है, तो एंट्री होना जरूरी है. अगर कोई पर्सन है उसका एंट्री नहीं हुआ है उसका टाइटल का, तो मतलब एविडेंस नहीं रहेगा उसके पास कुछ शेयर का या इंटरेस्ट का. सो एंट्री होना जरूरी होता है. The discretion can be made with respect to this rule by the controller or a court after recording their reasons in writing. So अभी देखो, discretion can be made with respect to this rule by the controller. तो controller का discretion होगा या फिर कोर्ट का होगा. Discretion means what?
मतलब कंट्रोलर ने अगर बताया तो, बिकॉज डिस्क्रिशन इज मतलब डिस्क्रिशन कंट्रोलर का होगा या फिर कोर्ट का होगा. डिस्क्रिशन कैन बी मेड विथ रिस्पेक्ट टू दिस रूल बाय द कंट्रोलर. मतलब अगर कंट्रोलर ने बताया तो या फिर कोर्ट ने बताया तो. इफ द कंट्रोलर गिव्स द ऑर्डर, डिस्क्रिशन इज द नथिंग बट द ऑर्डर. इफ द कंट्रोलर गिव्स द ऑर्डर या फिर कोर्ट गिव्स द ऑर्डर, ठीक है, आफ्टर रिकॉर्डिंग देयर रीजंस इन राइटिंग, then he will give the order and then only it will happen. ठीक है. No, it's okay. ये पढ़ चुके हैं क्या हम? The patent rules 2003 with respect to registration of the title and interest in patents. The application that is made under section 69 of the Patents Act must be made in form 16, जो आपने क्वेश्चन पूछा था. ठीक है. तो मैम ये फॉर्म 16 के साथ साथ अपने को असाइनमेंट डीड वगैरह भी सबमिट करनी पड़ती है. हाँ, यस. और अगर एप्लीकेंट बोलता है कि मुझे ये असाइनमेंट डीड्स के टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्क्लोज नहीं करने हैं तो फिर कंट्रोलर नहीं करेगा. इसके नहीं साथ नहीं, वो फिर डिस्क्लोज नहीं होते अनलेस एंड अनटिल द कोर्ट अगर बताएगा तो नहीं, तब तक नहीं होगा वो. अदरवाइज नहीं होगा. मतलब क्यों होगा वो चीज? नहीं होगा. वो तो वो दोनों के बीच में का चीज है ना, वो क्यों डिस्क्लोज होगा? Yes. The application that is made under section 16 of the Patent Act must be made in form 16. An application for making an entry in the register of patent of any other. This is in which section? 69. 69. Okay. This is rule. Okay, this is rule. 91, 92. 91, 92. Okay. 90 sub rule 1, 90 sub rule 2. फॉर्म 16 देखा है ना हमने अभी? 16 No. नहीं देखा. ओके. नहीं. वो देखना पड़ेगा. मैम ये फॉर्म्स वगैरह सारे के सारे रटे होने चाहिए क्या? या नहीं, टाइटल एक्चुअली पता तो होने चाहिए. मतलब रट्टे का पता नहीं, आई डोंट नो. नहीं, आई मीन पूरा जो कंटेंट वर्ड टू वर्ड ऐसे लर्न वगैरह नहीं होना चाहिए. मतलब वो जो काम करते हैं लोग तो उनको पता है. मतलब वो मतलब जो लोग काम कर रहे हैं ना पेटेंट्स का, उनको तो आ ही नहीं, वो जाता तो है. डेली बेसिस पे मैम काम कर रहे हैं तो उनको याद है. पर आपने उस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन क्या रटा था? रट्टा मतलब पढ़ना तो पड़ता है इसको. हाँ, पढ़ो मतलब पढ़ो आप. मेमोराइज किया. यस. हाँ, पढ़ो आप. ओके. हाँ हाँ. हाँ, वो बार बट बार द पढ़ेंगे. कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज मस्ट एक्चुअली. ठीक है. हाँ. फॉर्म 16 में देखो क्या दिया है. एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ टाइटल, इंटरेस्ट इन अ पेटेंट और शेयर in it, or registration of any document supporting supporting क्यों होगा वो? supporting to affect the proprietorship of the patent. Okay. हम purporting ही है. This is purporting. अच्छा, बताओ मुझे क्या Yes, मीनिंग ma'am. है इसका? डिक्शनरी मीनिंग तो बोल रहा है कि टू गिव द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग समथिंग और हैविंग डन समथिंग व्हेन दिस मे नॉट बी ट्रू. Document purporting to affect proprietorship of the patent. इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है. Registered patent address including postal code. कुछ नहीं, नॉर्मल है. ठीक है. अभी सेक्शन 69(1) पढ़ो.
Registration of assignment and transmission. हाँ पूरा पढ़ लो. Where any person become entitled by assignment, transmission, or operation of law to a patent or to a share in a patent, or becomes entitled as mortgage licensee or otherwise to any other interest in a patent. He shall apply in written in the prescribed manner to the controller for the registration of his title, or as the case may be, of the notice of his interest in the register. Okay, समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा. नहीं मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि समझ में ही नहीं आ रहा है. नहीं समझ में तो आ रहा है मैम. हाँ हाँ. पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना अलग बात होती है. ओके ठीक है देखते हैं. Where any person become entitled by assignment, transmission or operation of a law to a patent. ठीक है. अगर कोई पर्सन है वो उसका एंटाइटलमेंट मिला है या एक तो असाइनमेंट मिली है उसकी या फिर ट्रांसमिट हुआ है उसके पास या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ से मिला है असाइनमेंट टू अ पेटेंट और टू अ शेयर इन अ पेटेंट और बिकम एंटाइटल्ड एज अ मॉर्टगेजी licensee or otherwise to any other interest in a patent. He shall apply in writing in the prescribed manner to the controller for the registration of his title. तो वो अप्लाई कर सकता है कंट्रोलर को कि मेरा जो ये एज अ मॉर्टगेजी लाइसेंसी या फिर एसआईडी या फिर शेयर होल्डर बोल के जो टाइटल मिला है उनको वो रजिस्टर करवा दो ऐसे बोल के वो ही कैन अप्लाई और एज द केस में बी ऑफ नोटिस ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द रजिस्टर या फिर कोई भी केस हो सकता है इसमें से of the notice of his interest in the register. Okay, just like a mutation, when we get some land or something, we just apply for the mutation in the Nagar Nigam or something. नहीं मतलब कंट्रोलर को बताएगा ना वो कि आई एम आल्सो एंटाइटल्ड. ओके तो वो अप्लाई कर देगा इन राइटिंग जो भी फॉर्मेट है उसमें. ओके मींस द एप्लीकेंट उसको पेटेंट एजेंट को बताएगा कि ऐसा कर. हाँ तो उनको वो फॉर्म भरना पड़ेगा फॉर्म 16. फॉर्म 16 हाँ उसमें दिया हुआ है ना देखो आप. ठीक है हमारा अभी तो खत्म हो गया. हाँ फॉर्म 16 एक बार और देख लेते हैं. फॉर्म 16. हाँ insert the name and address and nationality of the applicant. I hereby apply that my name may be registered in the register of patent as a person entitled to the patent or share in the patent and interest in the patent, detail of which are specified below. Patent number, date, grantee, patentee, and proof thereof. We transmit the accompanying with a certified copy thereof. Okay. Describe the nature of the document, given the date and name, address, nationality of the party thereof. Ma'am, here grantee and patentee both he will write or only in one? दोनों सेम ही होगी तो लिख दो ना वहाँ पे. अच्छा. हाँ. And transmit wherein the attested copy of in respect of patent number, date, granted to
office the patentee as well as the original document of verified. Complete address including postal. Okay. And signed. Name of the natural person who has assigned. Okay. तो छोटा फॉर्म ज्यादा बड़ा नहीं. yes. वो सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा है. हाँ. That's it. Okay. ठीक है. ठीक है, तो आज का तो लेक्चर खत्म हो गया, लेकिन हमने हाँ सेक्शन पढ़े नहीं है. ठीक है, बाद में देखते हैं वो, और एक बार पढ़ लेंगे 10 मिनट का जब नेक्स्ट टाइम होगा ना. And I will give you the more questions related to patent agent exam. Okay. So, although I don't got any मतलब preparation timing actually, and sorry for that. पर मैं अच्छा सीखा, मतलब मालूम पड़ा कि किस तरह से इन डेप्थ पढ़ना चाहिए. हाँ यस ठीक है. मतलब छोटा ही पढ़ने में कितना 3 घंटे हम लोगों को लग गए, 4 घंटे पढ़ते पढ़ते. हाँ. But thanks a lot, ma'am. So taking the interest and going one by one in the all minute things and narrated very well. Okay, thank Yes, you. actually, ma'am. Thank you so much. हाँ ये आपका नाम क्या है? के आ रहा है मतलब. मेरा कश्मीरा and Dr. Geetali. Okay. Yeah, Geetali. So what is your qualification, Geetali? Me is a PhD in medicinal chemistry, and I have around 14 years industrial experience. Now I am working as a research scientist in Banaras Hindu University, Varanasi. Okay. So okay, and next candidate. Ma'am, I'm MSc in biotechnology. Okay. Qualification is very quite good. मतलब आप तो काम बहुत अच्छा कर रहे हो. Yes, ma'am, it was my internal interest, because many times I argue to my colleagues or scientists that we can go through this research, and they people just pretended no, don't touch this patent because this is the patent, so we should have to omit the patent work. Okay. So I was arguing many times, no, but patent, patent is there, but we have to see that whether it is survive or not, potential or not. It is only in the prior art, but by means not that we cannot take into the research work. Okay. We can mention this is the patent, just reference we can give, but we can go through the research. Yes. So this created a lot of interest, and now I am just motivated and going to the patent agent examination. Okay. That's nice actually. हाँ अच्छा है यार, आपका क्रैक हो जाएगा, कुछ नहीं. मतलब टेंशन मत लो. पर मैम पढ़ना तो जरूरी है ना, हाँ नहीं, अभी तो बहुत सारे दिन है ना, मतलब बहुत सारे दिन है. वो 15 दिन में हो जाता है. अच्छा. तो जब ये लेक्चर्स होते हैं, क्लास ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तभी मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ. हाँ मतलब अगर आप असिस्टेंस लोगे तो आपका इजी हो जाएगा. हाँ, इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, अदरवाइज टू मच theoretical it is. So no, the language problem is there because the legal language is there, so that's why the terminologies you don't know about. Exactly. Many more, so that's it. And because of this science stream, it is, I feel that it is more theoretical. Yes, I'm also from science field. Okay. But I got मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था. मुझे तो टाइम भी नहीं मिला था. मुझे तो एक दिन भी नहीं मिला था छुट्टी. सो और मैंने ऐसा एग्जाम के लिए कुछ नहीं किया था प्रिपरेशन, सो बट हो गया. ओके. आपका भी हो जाएगा, सिर्फ जेन्युइनली मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ करना. दैट्स इट. अच्छा. हाँ यस, और रट्टा वगैरह मत मारना. अच्छा. हाँ लेकिन लॉ तो 2-3 बार पढ़ना पड़ता है. हाँ. क्योंकि उसका लैंग्वेज जो है ना, तो वो दिमाग में बैठना चाहिए, क्योंकि जब आपको पेपर टू को आपको लिखना है ना कुछ चीजें, तो वो उसी लैंग्वेज में होनी चाहिए. सो इन दैट वे तो आपको 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा पेटेंट एक्ट. ओके. और जब सेक्शन पढ़ोगे तो रूल्स के साथ पढ़ लेना. अच्छा. हाँ यस ठीक है. एंड आल्सो आई एम प्रिपेयरिंग द नोट्स फॉर यू, सो वो आपको मैं बाद में दे दूंगी. ठीक है. ओके मैम. हाँ ओके. थैंक यू सो मच.
हाँ, Thank you, ma'am. So kind of you. ओके बाय. अभी हम Bye. ठीक है. I will close this one. Okay. Okay, thank you, ma'am. Bye. Good night. Bye. Bye.